उससे आवाज से ओके, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। ये 300 booms, one night stand। और लग रहा है भाई, लगा रहे भाई। ऑल द बेस्ट इनोवेशिया। ये तो इनोवेशिया कमेंट করেছে তো লেখা আছে। क्या होते हैं, CSS के अंदर ग्रिड क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, पीयूष गौड़े। 100 ब्यूटीफुल वेबसाइट्स। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक HTML बेसिक CSS पढ़ते हैं और सीधा जावास्क्रिप्ट पर जंप कर जाते हैं। नहीं, एटलीस्ट 100 स्टैटिक लैंडिंग पेजेस बनाओ। आप समझो HTML में क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी कैसे काम कर सकती है, एरिया प्रॉप्स क्या होते हैं, তুমি একটা आप জিনিস समझो বলো ভাই, सेमेंटिक टैग्स एंड नॉन सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, চলতে হয়ে গেছে। CSS के अंदर ग्रिड क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, किस तरह से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन काम करता है, मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट क्या होती है, राइट, एंड एनिमेशन किस तरह से काम करती है, एनिमेशन की फ्रेम्स कैसे काम करते हैं। तो वो सब चीज़ें समझो एंड एटलीस्ट 100 ब्यूटीफुल स्टैटिक लैंडिंग पेजेस बनाओ। वंस यू हैव डन दिस ना, उसके बाद आप गिट एंड गिटहब को पढ़ो। ये यहाँ पर क्यों है पीयूष, एकदम से हम HTML CSS पढ़ रहे थे and एकदम से गिट एंड गिटहब क्यों है, और मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है। देखो, गिट एंड गिटहब ना इज़ अ वेरी एसेंशियल स्किल, जो मैं देख रहा हूँ आजकल के न्यू डेवलपर्स को ये आता ही नहीं है। उनको सिर्फ गिट कितना आता है, बस मैं गिट पे पुश कर सकता हूँ, गिट से पुल कर सकता हूँ। यार गिट इज़ मोर देन दैट। गिट के अंदर ब्रांचेज होती हैं, गिट के अंदर पुल रिक्वेस्ट होती हैं, गिट के अंदर वर्क फ्लोज होते हैं, गिट के अंदर हुक्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें भी मास्टर करो, ठीक है। बिकॉज इवेंचुअली जब आप एक What? कंपनी में या फिर किसी भी रियल এত কিছু হয় গিটে? Yes, GitHub. What is the CI/CD pipeline, by the way? I listened about, but I don't know actually. Manually, not automatically. Oh, acha, acha, acha. That one is CI/CD. Okay. And I also realized, yeah, I also realized that if you have like front and back end, and if you make two branches in the GitHub, okay, the front end and the back end of a same repo. Okay. So if you like deploy two branches in the version, one is front end, one is back end. If your back end is down, your front end will your production back end will not be down. Like you got the point, right? If one is down, then the other one will not be down if you are using two different branches. Vercel has the Vercel has the option to choose which branch we like to deploy. So this is the use of branches basically. The production branch will be different, development will be different, right? Main branch will be the main, obviously. प्रोजेक्ट पे काम करोगे, यू विल बी वर्किंग एज अ टीम। एंड अगर आपको गिट के फंडामेंटल्स ही नहीं आते, आपको रीबेसिंग के बारे में नहीं पता, आपको मर्ज रिक्वेस्ट के बारे में नहीं पता, what the what the heck is what the heck is merge request? Customer आपको specific. मर्ज कन्फ्लिक्ट्स के बारे में नहीं पता, आपको पुल्स के बारे में नहीं पता, तो इट्स इट्स नॉट गुड, राइट। तो गिट एंड गिटहब के ऊपर Yeah, मैंने yeah. पूरा एक डेडिकेटेड It's वीडियो भी not बना good. रखा है, एटलीस्ट 2 आवर्स का है वो। नॉट श्योर कितने आवर्स का है, ठीक है, तो मैं आपको उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा। तो ये इनफैक्ट ये पूरा शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सो गिट एंड गिटहब को पढ़ो एंड जितने भी 100 ब्यूटीफुल स्टैटिक पेजेस हैं उनको आप गिट पे चेकआउट करो, ओके। तो गिट के ऊपर आप उसको पुश करो। उसके बाद आप बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंट्रोल फ्लोज, डेटा स्ट्रक्चर्स, इसमें मेनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। एंड डॉम एपीआईज के बारे में आप पढ़ो, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, ब्राउजर फीचर्स लाइक लोकल स्टोरेज क्या होता है, ओके।
एंड उसके बाद आप ये कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो लाइक डिजिटल क्लॉक, स्टॉप वॉच, टाइमर ऐप। तो इसमें आपको सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल्स, इन सब चीज़ों के মাল্টিটাস্কিং बारे में पता করতে लगेगा। ভাই टू একটা डू কাজ ऐप बनाओ করো एक ভাই लोकल হয় स्टोरेज यूज़ শুনলেন करके, ভাই वेदर फॉरकास्ट ऐप बना सकते हो यूज़र की দুটো কাজ একসাথে করছেন হয় গো करंट শুনবেন लोकेशन लेने দুটো के बाद। কাজে मंकी टाइपिंग गेम जिसे आप कुछ बना सकते हो, इमेज स्लाइडर्स बना सकते हो और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ तक आपने क्या টেলিগ্রামের किया, পর থেকে থার্ড आपको পার্টিটা बेसिक ডিসপ্লের प्रोग्रामिंग পর भी থেকে आती है, পুরো একটু आपको হয়ে HTML গেছে आता है, आपको অ্যাটলিস্ট CSS কমে आता গেছে है, एंड नाउ यू कैन इवन बिल्ड इंटरैक्टिव वेब पेजेस। আগের মতো तो यहाँ पर ना আগের आप মতো করো एक আগের तरह से মতো बहुत ही 16 बेसिक ঘন্টা স্ট্রেট डेवलपर बन चुके हो जिसको एक आइडिया है वेब डेवलपमेंट के बारे বিজনেস में। পেপার ठीक है, अब यहाँ तक आते आते ना आप काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम हो चुके होगे, आपको लगेगा यार ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, माई ब्रेन इज़ गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन जहाँ पे मैं एक डेवलपर बन रहा हूँ, लेकिन हैव ब्रेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये आपको 3 महीने लग सकते हैं, 3 महीने भी ज़्यादा आपको जावास्क्रिप्ट में लगेंगे, मतलब एच टी एम কৃষ্ণ एल सी एस লাইন एस तो डेढ़ দিচ্ছে महीने में हो जाएगा। तो ज़्यादातर आपको जावास्क्रिप्ट में टाइम लगने वाला है। तो ऑलमोस्ट यू हैव स्पेंट लाइक 4 मंथ्स हेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। মাইনারও তোমার तो নামে फोर কেস मंथ्स করে के দেবে बाद ना यू कैन हैव अ ब्रेक फॉर 15 डेज। अब पीयूष, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ब्रेक लो 15 डेज का, दूसरी तरफ आपने टॉपिक्स डाल रखे हैं। ब्रेक का मतलब है कोडिंग से हटो। ठीक है, अब आपको कोड नहीं करना है, आपको ना चीज़ें बेंच वॉच करनी है सिर्फ। कुछ नहीं है, 15 दिन का छुट्टी लो और बस यूट्यूब पे आपको देखना है। और ये जो वीडियोस है ना, ये आप जिम में देख सकते हो, वॉक पे देख सकते हो। तो ऐसा कोई कोडिंग वोडिंग नहीं करना है, तो आपको बस ये वीडियोस देखनी है। कैसे वीडियोस? इंटरनेट क्या है, कैसे ही इंटरनेट काम करता है, इंटरनेट है ही क्या, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, एफटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है। टीसीपी वर्सेस यूडीपी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ सकते हो। फिर एक डीएनएस क्या होता है, ये डीएनएस क्या बला है, और ये डीएनएस वर्क कैसे करता है, किस तरह से आपके डीएनएस रेजोल्यूशंस काम करते हैं, आपका ब्राउजर कैसे काम करता है, आपका जो डोमेन नेम्स है वो कैसे काम करते हैं। ये जो डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं ना, AAA, सी नेम, TXT नेम सर्वर एंड MX रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स क्यों होते हैं, किस हेलो। तरह से डीएनएस इनको इंटरनली स्टोर करता है। रूट नेम सर्वर्स क्या होते हैं, जो आपके टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, राइट, .com, .in, .io, वो कैसे काम करते हैं। तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। क्या है, सिर्फ बिंज वॉच ही तो करना है, कुछ कोड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे आपको वीडियोस बिंज वॉच करनी है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, 3 वे TCP हैंडशेक्स क्या होते हैं, वेब RTC क्या चीज़ है, एंड यूडीपी कैसे काम करता है। कोड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओवरव्यू समझना है। आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, नैट गेटवे क्या होता है, सबनेट मास्क कैसे काम करते हैं, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। तो आपको 15 दिन में ना बस इनको बिंज वॉच करना है। ठीक है, रोज़ की एक वीडियो भी लगा लोगे बहुत है। आई एम नॉट श्योर कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यार 10, टोटल 10 टॉपिक्स है, 15 दिन का टाइम है आपके पास। तो थोड़ा बस यहाँ पे चिल मोड में रहो, आराम से ना इनको बिंज वॉच करो। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि ठीक है, इंटरनेट पे ना कोडिंग के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो इंटरनली काम करती हैं, विच इज़ एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम अस। ठीक है, वंस यू आर हियर ना, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बिकॉज आपने रिसेंटली ना इन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च किया होगा ना, आपको ना यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके ब्रेन को क्यूरियोसिटी आएगी बैक एंड के ऊपर। ठीक है, सी मैंने यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसे रखी हैं सो दैट आप ना क्यूरियस हो जाओ उसके बारे में। तो ये ना एक तरह का स्पार्क है, ये आपकी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करेगी। तो अब यहाँ पे आप बैक एंड करना चाहोगे, फिर बैक एंड में पढ़ो कि एक सर्वर होता ही क्या है, क्या ही होता है एक सर्वर, डिफरेंस क्या है एक वेब सर्वर, API सर्वर, फाइल सर्वर के बीच में। तो आपको समझ आएगा इस सर्वर वर्ड क्यों यूज़ होता है। फिर आप देख सकते हो यार, क्लाउड सर्वर वर्सेस ऑन प्रेम सर्वर्स क्या What do होते you हैं, mean by a इनके अंदर green square? वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, जैसे प्रॉक्समॉक्स यूज क्या होता है, किस तरह से एक ही सर्वर को मल्टीपल वेंडर्स को किस तरह से AWS रहता है। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते Oh, हो। GitHub. तो कौन सा वो वर्चुअलाइजेशन वो यूज़ करते हैं, तो वो Today सब चीज़ें I आप देख सकते हो। haven't even तो यहाँ started पे आप working स्टार्ट कर today. सकते हो Node.js के साथ। Yesterday I क्यों? did. बिकॉज आपने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हो, तो आपको Node.js के साथ लाइक स्टार्ट करने में आसानी I होगी। will. I will यू कैन wait. स्टार्ट बिल्डिंग रेस्ट APIs इन नोड। फिर आप थोड़े से फ्रेमवर्क्स देख सकते हो, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस है, होनो है, इंटेंट JS है। तो ये सारे फ्रेमवर्क्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो टू बिल्ड रेस्ट APIs। इंटेंट JS इनमें से थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इट इज़ अ बैटरीज इंक्लूडेड। सो एक्सप्रेस एंड होनो थोड़े से नॉर्मल है, राइट। इंटेंट JS आपको बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स देता है। तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। एंड फिर आप टेस्टिंग कर सकते हो APIs की यूजिंग द पोस्टमैन लाइक टूल्स देख सकते हो आप, हेडर बॉडी एंड HTTP मेथड्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। डेटाबेसेस इंटीग्रेशन आप देख सकते हो कि एक बैकएंड डेटाबेस के साथ कैसे काम करता है। MongoDB एंड Mongoose के साथ स्टार्ट करो बिकॉज इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। सो उसके बाद आप देख सकते हो ORM क्या होता है, ये ORM हमें क्यों चाहिए होता है।
एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर का डिफरेंस क्या है। आप पोस्टग्रेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन लर्न एसक्यूएल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओ देख सकते हो, लाइक प्रिज्मा, ड्रिजल एंड नेक्स्ट जैसे आप ओ देख सकते हो। डोंट वरी, आई नो अभी तक बहुत बेसिक जा रहा है, बट आएंगे, बहुत एडवांस टॉपिक्स पे भी आएंगे, ठीक है। राइट। सो उसके बाद आप देख सकते हो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, JWT सेशंस कैसे काम करते हैं, JWT टोकन्स कैसे काम करते हैं, सेशंस और JWT में क्या डिफरेंस है। फिर आप थोड़े से प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो, लाइक सिंपल CRUD एप्लीकेशन, सिर्फ API प्रोजेक्ट्स हैं ये। ई कॉमर्स API है, टास्क मैनेजमेंट API है, वेदर API का रैपर है। तो ये सब चीज़ें आप जब बिल्ड कर लोगे, यू विल गेट अ गुड कॉन्फिडेंस कि अब मुझे बैक एंड भी कोड करना आता है। नाउ यू कैन लर्न अबाउट फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, जैसे रेडिस क्यू सिस्टम, रेट लिमिटिंग क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में आप पढ़ सकते हो। लाइक यू हैव लीकी बकेट स्ट्रैटेजी, टोकन बकेट स्ट्रैटेजी, तो आप स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ सकते हो। एसिंक्रोनस एंड बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, सिर्फ पढ़ना है, इम्प्लीमेंट नहीं करना है, कोड नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है, ठीक है। डेटाबेस इंडेक्सेस क्या होते हैं, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशंस क्या होते हैं, शार्डिंग वगैरह क्या होता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बोल्ड करना चाहूँगा कि ना, केस स्टडीज़ को बिंज वॉच करो। मतलब कि जो लार्ज कंपनीज लाइक गूगल हैं, गिटहब है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके ना ब्लॉग्स होते हैं, इनकी केस स्टडीज़ होते हैं, इनकी इंजीनियरिंग ब्लॉग्स होते हैं। हमने ये कैसे किया, हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, हमने इस बग को कैसे रिजॉल्व किया, या फिर हमने ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे आर्किटेक्चर की इतने बड़े स्केल के ऊपर। तो अगर आप इनको पढ़ोगे ना, योर ब्रेन एक्चुअली डेवलप्स दैट स्किल। तो आपको ना सिस्टम डिज़ाइन ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ एन ऑन गोइंग हैप्पी एक्टिविटी, न्यू हम ईयर आज भी देव। करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नया साल फिर आप थोड़े मुबारक हो। सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे ना स्टार्ट कर कहाँ सकते हो। क्या? घूमने गए हो ट्विटर बताया लाइक नहीं। कम्युनिटीज़ में एक्टिव हो जाओ, बिकॉज आपको ना काफ़ी अच्छी नॉलेज हो चुकी है। अगर आप थोड़ा देखो, थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड में देखो, तो आपको ना काफ़ी अच्छी नॉलेज हो चुकी है। एंड दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग इन ट्विटर लाइक कम्युनिटीज़। आप ट्विटर स्पेसेस ज्वाइन कर सकते हो हमारे। आप बात कर सकते हो कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप पूछो कि यार आप बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या लर्न कर रहे हो एंड क्या आप बिल्ड कर रहे हो। उसके बाद पूछो कि मैं और एडवांस टॉपिक्स क्या पढ़ सकता हूँ। बाकी डेवलपर्स को बात करते सुनो, दैट व्हाट दे आर डूइंग, उसके अंदर से टॉपिक्स को पिकअप करो। जैसे मान लो कोई कहता है यार मैं तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, तो उसको नोट डाउन कर लो, बाद में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो। वॉच आउट फॉर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग एंड ट्राई सॉल्विंग एंड क्रिएटिंग सॉल्यूशंस। तो वाइल यू आर इन दिस स्पेस ना, जब आप ट्विटर पे एक्टिव हो, तो यू कैन सी कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टूल है जो आप बिल्ड कर सकते हो, तो उसके बारे में आप बात करो। आप उसको बनाना शुरू कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना, फील मोर कॉन्फिडेंट ऑन ও व्हाट यू বাইরে डूइंग হয়ে इन যায় लर्निंग। দাদা, শোনো देखो, শোনো। जी। আমি এক সেকেন্ড, আমি একটা ইনস্টাগ্রামে একটা ছেলেকে ফলো করি, ঠিক আছে। ও মানে ডেভেলপার টাইপের, ঠিক আছে। তো এবার ও একটা বাউন্টি রেখেছে, এই 2 তারিখ পর্যন্তই আছে। ও একটা সিম্পল এপিআই বানাতে দিয়েছে, ঠিক আছে। এপিআই এন্ড পয়েন্ট বলে দিয়েছে কি কি বানাতে হবে। আর 5,000 টাকার বাউন্টি দিয়েছে, করবে কি? সত্যি জেনুইন ছিল, আমি যদি দেখাই তুমি হয়তো চেনো ওকে। টাকা বলো, দেখো এই দেখো করবো না ইনস্টাগ্রামে আগেই বলে খুলছি। দিচ্ছি। করবে না? না, দেখো আমি দেখতে চাই। আচ্ছা ঠিক আছে, এমনি জেনুইন ছিল আমি যেটা দেখলাম। আহ, হুম। चाहे आपको बहुत कुछ आता है, উম, चाहे ঠিক आपको আছে, कुछ তুমি नहीं आता है, ভিডিওটা দেখো, আমি चाहे आपको কিছু लग रहा है রেফারেন্স कि করি। यार यू आर एक्चुअली वेरी लैगिंग बिहाइंड, आपके साथ के जो बच्चे हैं और डेवलपर्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो चाहे आप ये पूरी चीज़ें पढ़ लो, चाहे आप इससे भी एडवांस चीज़ें पढ़ लो, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट শেয়ার तो করবো कोई এখানে फ़ायदा আমি, नहीं। तो यार, হুম। कॉन्फिडेंस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट শেয়ার होता है, স্ক্রিন ठीक শেয়ার है। করবো। जब कॉन्फिडेंट फील करते हो ना, দাঁড়া यू দেখছি। ऑटोमेटिकली बिल्ड थिंग्स, यू ऑटोमेटिकली लर्न थिंग्स एट अ वेरी फास्टर स्पेस। लेकिन अगर आप किसी का कॉन्फिडेंस किल कर देते हो, अगर आपके अंदर দেখো, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, দেখতে तो পাচ্ছ? अगर आपको बहुत कुछ आता भी है, योर ब्रेन विल नॉट वर्क ऑन द फुल पोटेंशियल। सो कॉन्फिडेंट फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, দেখতে पाচ্ছ? ओके। एंड कनेक्ट विद द राइट पीपल, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। দাঁড়া सो দেখছি बी একটু, দাঁড়া एक्टिव, ताकि आपको চ্যাট पता लगे कि প্রম্পটটা लिखे आप নি। अभी किस लेवल के ऊपर ঠিক स्टैंड আছে, करते हो, ভুলে व्हाट যাবো। अदर पीपल आर डूइंग, व्हाट यू आर अप ঠিক टू, আছে, লিখে एंड নেবো। हाउ मच यू हैव टू ग्राइंड, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। तो बैकएंड तो आपका बेसिक्स हो चुका है, आपको बेसिक एपीआईज के बारे में पता है, आप एपीआईज को कोड कर सकते हो, बेसिक, ठीक है। आपको डेटाबेसेस के बारे में पता है, ओआरएम्स पता है, तो आप एक सिंपल क्लाउड एप्लीकेशंस बैकएंड में बना सकते हो। अब आप रिएक्ट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो रिएक्ट आपको 2 महीने आपको लगेंगे, जिसमें आप रिएक्ट क्यों चाहिए, रिएक्ट के फंडामेंटल्स, देखो ये सब कहानियाँ आपको सारे यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड कर सकते हो, तो ये सारी कहानियाँ आपको रिएक्ट में पढ़नी है, ओके। अब यहाँ से आपका जो मेन
स्ट्रगल है, आपका जो मेन देखा यूएसपी होने वाला है वेट वो स्टार्ट होगा। नंबर 1। ये देखो, এটা চাল। के लिए एक छोटा सा गिफ्ट 69 डेज ऑफ मेक इंडिया कोड का डे 61 और ये है मेरे तरफ से पूरे 5,000 रुपए की बाउंड्री। আচ্ছা এখানে গান। आपको एक सिंपल एक्सप्रेस जेएस या फास्ट एपीआई बनाना है। इसमें से अगर मैं पूरे इंडिया के अगर कोई भी मैं पर्टिकुलर एरिया का पिन पॉइंट करूँ तो एरिया का जो लोकल लीडर है এটা গান বাজছে কেন? यानी कि नगर सेवक, एमएलए, एमपी, इनका कांटेक्ट डिटेल्स और नाम और ये लोग अभी क्या पोजीशन में वो देगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोरीवली डालूं, मुंबई का एक जगह है, तो मुझे वहाँ का अगर नॉर्थ मुंबई है तो वहाँ का नगर सेवक कौन है, वहाँ का एमएलए कौन है, वहाँ का एमपी कौन है, बस इनका नाम मिलना चाहिए और इनका डेजिग्नेशन, जैसे कि ये 3 जो मैंने बताया वो, और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि ईमेल आईडी और फोन नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट डिटेल मिसिंग है तो एक एंड पॉइंट रखना जिससे कोई दूसरा जन आके पब्लिकली उनका वो चीज ऐड कर सके। आपको कोई भी डाउट है या कोई भी डिस्कशन करना है तो ये वीडियो का कमेंट सेक्शन को उसके लिए यूज करना, मैं यहाँ पे ही रिस्पॉन्ड करूंगा। उसके बाद में आपको आपका एग्जैक्ट गिटहब का लिंक डालना है और हो सके तो आपका वर्किंग एंड पॉइंट डालना। ऑन रेंडर ऐसा कोई भी सर्विस आप यूज कर सकते हो। आपने गेस कर लिया रहेगा कि कंटिन्यूएशन में और एक बाउंड्री आएगी और उसके बाद में शायद और भी आ सकती है। तो शो গানটা কপিরাইটেড দেখা যাবে না। মানে গান এত জোরে চলছে। দাদা শোনো শোনো, এটা মানে বুঝলাম না এটা কি বললোটা কি, এই যে এপিআই তাহলে ধরে আমায় নাও। জিজ্ঞাসা করিস না, নিজে বোঝ। হ্যাঁ নিজে বোঝ, আমায় জিজ্ঞাসা করিস না। মানে বুঝলাম না। আরে বোঝালো তো, আবার ওটা না বোঝার কি আছে? না না, বুঝতে পেরেছি কিন্তু এপিআই পাবো কোথা থেকে, মানে আমি ওদের ওই গভর্নমেন্টের কোনো ডিটেলস পাবো ওয়েবসাইট কোথা থেকে থেকে? পাবো নিশ্চয়ই। কোন ওয়েবসাইট? গভর্নমেন্টের কোনো ওয়েবসাইট থেকে পাবো নিশ্চয়ই। বলছিলাম বানাবে এটা? না, কেন? অত সময় নেই এখন। ঠিক আছে, ভালোই তো ছিল, বানাবো না কেন, হ্যাকাথনে আমার যেতে বলে যাবো না। ঠিক আছে, সেকশন ঠিক আছে। হুম, 320। यू नो बैकएंड, यू नो फ्रंट एंड, यू नो डेटाबेसेस, यू नो एवरीथिंग। अब आप क्या बना सकते हो? फॉर एग्जांपल, आप एक रियल टाइम कोलैबोरेशन गूगल डॉक्स लाइक टूल बना सकते हो। आप एक मल्टी टेनेंट मल्टी वेंडर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हो। आप एक सोशल मीडिया ऑटोमेशन टूल्स बना सकते हो। आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन बना सकते हो लाइक जूम, इसमें आपका वेब आरटीसी और एसएफयू यूज़ होगा। आप एक लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस बना सकते हो यूजिंग आरटीएमपी, रियल टाइम मैसेजिंग प्रोटोकॉल। आप कोलैबोरेटिव वाइट बोर्डिंग टूल्स बना सकते हो विद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ऑथराइजेशन एंड मोर एडवांस फीचर्स। आप जैपियर जैसे ऑटोमेशन टूल्स बना सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। अगर आपने ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे में डाले और आपने बिल्ड किया ना, नंबर 1, आपके पास बहुत नॉलेज होगी बिकॉज आपको सॉकेट आयो आता होगा, आपको वेब आरटीसी आता होगा, आपको एक फुल स्टैक एप्लीकेशन को कोड करना आता होगा। ओके, यू नो हाउ टू इंटीग्रेट फ्रंट एंड बैक एंड, प्लस इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, फ्लॉन्ट करो ट्विटर के ऊपर आके, मैंने आज ये बनाया, मैंने आज वो बनाया। तो ये सब चीज़ें आप बना सकते हो। बहुत सिंपल है एप्लीकेशन बनाना ऑनेस्टली। ये एक सिंगल एप्लीकेशन, ये एक ही घंटे के प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ। ठीक है, इसको बनाने में 1 घंटा, ये भी 1 घंटे के, ये सारे 1 घंटे के प्रोजेक्ट्स हैं। और इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना भी रखे हैं। तो अगर आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हफ्ते का गेम है। एक हफ्ते के अंदर आप रोज़ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। मर्न स्टैक यूज़ कर सकते हो, पर्न स्टैक यूज़ कर सकते हो। पी मतलब बेसिकली पोस्टग्रेस को मैंने बोला है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ कर सकते हो तो दैट इज़ गुड। बट ठीक है, आप मोंगोडीबी भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ फाइन। ओके, मूविंग फर्दर, अब थोड़ा सा क्लाउड के बारे में बात करते हैं। बिकॉज भाई देखो, आपने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ बनाया, क्या फ़ायदा? बिकॉज मैं तो आपका लोकल होस्ट एक्सेस कर नहीं सकता हूँ, राइट? तो थोड़ा सा क्लाउड के बारे में सीखो। ठीक है, AWS क्यों पीयूष? क्या AWS तुम्हें स्पॉन्सर कर रहा है? नहीं। क्या AWS ने तुम्हें पैसे दिए हैं? आई होप सो, बट नहीं। AWS ना आपको हर चीज़ ऑफर कर देता है रॉ, कि भाई खुद करो। ये लो पकड़ो, लोड बैलेंसर ये पकड़ो, नेट गेटवे ये पकड़ो, इंटरनेट गेटवे ये पकड़ो, VPC ये पकड़ो, टारगेट ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप, सब तुम मैनेज करो। तो एक्चुअली यू गेट द कंट्रोल। इसमें ना एब्स्ट्रैक्शन काफ़ी कम है।
सो AWS के अंदर आप पढ़ सकते हो EC2 के बारे में, लोड बैलेंसर, सिक्योरिटी ग्रुप, टारगेट ग्रुप्स, लोड बैलेंसर्स हो गया। क्लाउड फ्रंट के बारे में पढ़ सकते हो, VPCs कैसे काम कर सकते हैं, नेटवर्क गेटवेज क्या होते हैं, इंटरनेट गेटवेज क्या होते हैं, SES, SQS, S3, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स, प्राइवेट एंड पब्लिक VPCs क्या होते हैं, सबनेटिंग कैसे काम कर सकता है, IAM रोल्स क्या होते हैं, फेडरेटेड आइडेंटिटीज कैसे काम करती हैं, API गेटवेज क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो जिससे आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो एक AWS लाइक क्लाउड के ऊपर। तो जब आप ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर खुद से करोगे ना, यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑन द बैक एंड। ओके, सो ये सब चीज़ें भी आपको करना होगा। ओके, नाउ नाउ इज द टाइम टू बिकम अनस्टॉपेबल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकएंड स्पेसिफिक है। यहाँ पर ना आपको बैकएंड को ना इस तरह से मास्टर करना है कि लाइक नो वन डज। ठीक है, हर कोई ना यहाँ पर छोड़ देता है। ऑनेस्टली सेइंग एवरी वन लीव स्टिल हेयर एंड यहाँ पे ना वो जॉब हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ अ बैड आइडिया। मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे जॉब हंटिंग करो, बिकॉज जॉब्स मतलब कि जब आप एक रियल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हो, व्हेन यू आर पेड फॉर इट, व्हेन रियल यूजर्स आर देयर, ये सारी नॉलेज इज़ गुड टू हैव, बट ये सफिशिएंट नहीं है कि आप अभी जॉब एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर पाओ। आई वुड से आप एक लो लेवल जॉब ले सकते हो इफ़ यू वांट, इफ़ यू रियली वांट मनी, राइट। यू कैन हैव लाइक सम फ्रीलांसिंग वर्क, यू कैन हैव सम इंटर्न लेवल रोल्स, बट नॉट अ वेरी हाई पेइंग जॉब। ओके, अगर आपको सच में हाई पेइंग जॉब एक सीनियर लेवल पे जाना है ना, दीज आर सम थिंग्स जिसके बारे में आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। यू शुड हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑन दीज थिंग्स। यू कैन रीड अ लॉट ऑफ पेपर्स, यू कैन रीड अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स, या फिर आप बहुत सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हो। नंबर वन, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में सर्विस डिस्कवरी कैसे काम करती है, ऑटो सर्विस डिस्कवरी कैसे काम करती है, लोड बैलेंसिंग क्या होता है, हार्ट बीट्स एंड हेल्थ चेक क्या होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, एक माइक्रो सर्विस और दूसरी माइक्रो सर्विस आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है, रेस्ट API हो सकता है, GRPC हो सकता है, मैसेज क्यूज हो सकता है, सॉकेट्स भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर, एंड सागा पैटर्न्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होगा। ओके, कैप थ्योरम्स क्या होती है, व्हाट आर द ट्रेड ऑफ्स बिटवीन कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, पार्टीशन टॉलरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या होती है, किस तरह से आप उसको अचीव कर सकते हो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, शार्डिंग क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, रीड रेप्लिका क्या होता है, डेटाबेसेस कैसे स्केल करते हैं, एंड कंसेंसस एल्गोरिदम क्या होता है, इंश्योरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स एग्री ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इनके बारे में पढ़ना है, जस्ट डीप में जाओ, बट ज़्यादा मतलब कोड वगैरह इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ने की हैं। फिर आप API डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन देख सकते हो। रेस्टफुल API क्या होता है, GraphQL क्या करता है, GRPC क्या करता है, API रेट लिमिटिंग कैसे आप कर सकते हो, एंड दिस हैथियोस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। अगर आपने GitHub की API के साथ काम किया, यू विल नो दैट व्हाट दिस इज। ठीक है, कैशिंग स्ट्रैटेजीज देख सकते हो कि कैश क्या होता है, कैश इनवैलिडेशन क्या होता है, CDN इंटीग्रेशन आप देख सकते हो क्लाउड फ्रंट यूज़ करके, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशेस क्या होते हैं, कैश पार्टीशनिंग कैसे होते हैं, और किस तरह से क्या, और ये जो कैश इनवैलिडेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैश को अपडेट कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कैश अपडेटिंग क्या होता है, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर आप एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग देख सकते हो, टास्क क्यू, वर्कर पूल क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कैसे काम करते हैं यूजिंग काफका, AWS, SNS, SQS, या फिर आप RabbitMQ ये सब चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ इवेंट ब्रिज। ठीक है, तो AWS का एक इवेंट ब्रिज होता है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मूविंग फॉरदर यू कैन सी डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशंस की, डेटाबेस को आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हो, इंडेक्सिंग, शार्डिंग, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, डेटा मॉडलिंग, उसके अंदर पेजिनेशन, कर्सर बेस्ड पेजिनेशन, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इंटरव्यूज़ में ना ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इनमें कोई ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, बिकॉज इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड अ टीम, यू नीड अ वेरी लार्ज स्केल। लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ओके, यू शुड नॉट बी ब्लैक बॉक्स। यहाँ तक आते आते ना सबको लगने लग जाता है कि पता नहीं मेरे को तो क्या ही आता है, मतलब मैंने तो पूरी दुनिया देख ली, मैंने सब कुछ देख लिया, बट नहीं। रियल जो इंजीनियरिंग होती है ना, वो एक्चुअली में ना यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स यू शुड एक्चुअली नो। उसके बाद यू हैव लाइक डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, हमने बात कर ली है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, इसमें OAuth 2, ओपन ID कनेक्ट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट, JWT क्या होते हैं, सेशन मैनेजमेंट्स कैसे काम करते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कैसे बना सकते हो, SSO क्या होता है, सिंगल साइन ऑन कैसे काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें आप बना सकते हो। ऑब्जर्वेबिलिटी एंड लॉगिंग, ठीक है,
तो प्रोमीथियस है, ग्राफाना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। सो लॉगिंग है, राइट, इसमें यू हैव लाइक लोकी, यू हैव मेट्रिक कलेक्शन, यू हैव ट्रेसिंग, अलर्टिंग, क्योस इंजीनियरिंग, इसमें क्योस मंकी के बारे में नेटफ्लिक्स सी अगेन ब्लॉग आ गया ना, कि जो क्योस मंकी है तो वो कैसे काम करता है, नेटफ्लिक्स ने जो इंटरनली टूल बनाया है ये क्या है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, कि सर्किट ब्रेकर्स क्या होता है, ठीक है, रीट्राइज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, ग्रेसफुल डिग्रेडेशंस क्या होती हैं, डेड लेटर क्यूज कैसे काम आते हैं, किस तरह से आप फेल्ड मैसेज को डेड लेटर क्यू में डालते हो, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सिक्योरिटी में यू हैव लाइक डेटा इंक्रिप्शन, रेट लिमिटिंग, CSRF टोकन्स एंड कॉर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, SQL इंजेक्शन एंड XSS प्रिवेंशन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, सीक्रेट मैनेजमेंट्स कैसे हम कर सकते हैं, हमारे ENV वेरिएबल्स को हम कैसे सिक्योरली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो सब चीज़ें हैं। देन थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स लाइक लोड बैलेंसर, रिवर्स प्रॉक्सी, वेब सॉकेट्स, TCP UDP, जीरो टाइम डिप्लॉयमेंट्स, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स, कैनरी रिलीजेस, रोलिंग अपडेट्स, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट ऑनेस्टली दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी, ओके। अगर क्रियोसिटी है ना तो ये सब चीज़ें ना ऐसे ऐसे सीख जाओगे, लेकिन अगर क्रियोसिटी नहीं है ना तो ये चीज़ें भी एक सब्जेक्ट बन के रह जाएंगी, आपको लगेगा यार ये एक सब्जेक्ट का पार्ट है, आप इसको एक बुक की तरह पढ़ोगे, यार बुक खोला यार आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स, आप रट रहे होगे। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स आर डिप्लॉयमेंट्स इन विच वी हैव टू काइंड्स ऑफ स्टेट्स, वन इज ब्लू स्टेट, वन इज ग्रीन स्टेट, ब्लू स्टेट्स इज वेयर द कंटेनर्स आर हेल्दी, ग्रीन स्टेट्स आर द न्यू कंटेनर्स, तो आप इसको ना इस तरह से पढ़ रहे होगे। लेकिन जब आपको क्रियोसिटी होगी ना, आपको ऐसे ना एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली योर ब्रेन विल प्रोसेस, ठीक है। सो क्रियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडवांस आर्किटेक्चर्स पढ़ सकते हो, सर्वलेस आर्किटेक्चर, सर्विस मेश क्या होता है, राइट, एज कंप्यूटिंग, हाइब्रिड कंप्यूटिंग, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। हाइब्रिड क्लाउड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देन यू कैन हैव डेटा पाइपलाइंस, कि डेटा को कैसे मूव करते हैं, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, एंड यू हैव डेटा वेयर हाउसिंग, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि पीयूष हमने बहुत कुछ डिस्कस तो किया, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी न्यू चीज़ें तो आई ही नहीं, Web3 कहाँ है, AI कहाँ है, यही तो है जो न्यू चीज़ें हैं, नेक्स्ट चीज़ किधर है, तुमने सारी न्यू टेक्नोलॉजीज उसमें डाली नहीं। देखो भाई, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन चुके हो। देखो अगर मैं इसके अंदर नेक्स्ट ईयर्स जैसी चीज़ें या फिर Web3 जैसी चीज़ें इंक्लूड भी कर देता हूँ, तो आप उसको पढ़ लोगे बिकॉज जस्ट बिकॉज वो इस रोड मैप के अंदर इंक्लूडेड है। बट एक बात बताओ, आपको ये तो पता है ना कि इस इंडस्ट्री में चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती हैं, कोई न्यू चीज़ आती है, कोई पुरानी चीज़ें चली जाती हैं, तो आप अपने आप को पढ़ोगे कैसे? क्या आप वेट करोगे कि पीयूष गर्ग या फिर कोई और यूट्यूबर हर साल एक नया रोड मैप लेकर आएगा? नहीं ना। यू हैव टू बिल्ड अ ब्रेन विच कैन लर्न एनीथिंग। तो जब आप ये पर्टिकुलर रोड मैप विच इज़ अ वेरी बेसिक वन, जब आप इसको कंप्लीट करोगे ना, आई वॉन्ट यू टू बिकम अ गुड इंजीनियर, कि कल को अगर कोई भी न्यू चीज़ें आती हैं आप उसको ऑटोमेटिकली ग्रैब कर पाओ, आप उसको सेल्फ लर्न कर पाओ, आप खुद ब खुद उनकी डॉक्यूमेंटेशन को समझ पाओ, उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। आई डोंट वांट कि हर चीज़ आपको स्पून फीडिंग करवाई जाए। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो, अगर आपने यहाँ तक ये वाला रोड मैप कंप्लीट कर ही लिया है, तो चाहे वो नेक्स्ट ईयर से, चाहे वो रीमिक्स है, या फिर कल को अगर कोई नया रिएक्ट का फ्रेमवर्क भी आता है, यू शुड बी एबल टू पिकअप, बिकॉज हमने यहाँ पे सारे फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, राइट। सिमिलरली कल को अगर कोई एक्सप्रेस जैसा कोई भी एक नया फ्रेमवर्क आता है, यू शुड बी एबल टू पिकअप। क्यों? बिकॉज नॉलेज ट्रांसफरेबल होती है। यू विल हैव, ओ अच्छा एक्सप्रेस में ऐसा था, इसमें थोड़ा सा ऐसे कर दिया, इसमें और ऑप्टिमाइज्ड है, तो नॉलेज हमेशा ट्रांसफरेबल होती है। अगर इसमें आपने AWS के ये सारे टॉपिक्स को समझ ही लिया है इंटरनली, तो कल को GCP के ऊपर मूव करोगे तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज होंगी, कॉन्सेप्ट्स सेम ही रहेंगे। सिमिलरली ऑन Web3, सिमिलरली ऑन AI साइड, तो हर चीज़ आप रिलेट कर पाओगे, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ पाओगे, ठीक है। तो स्टॉप गेटिंग स्पून फीडेड, तो आपको बस ये सब चीज़ें पढ़नी है। नाउ हियर इज़ अ हेड्स अप फॉर यू, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, दैट्स फाइन, वो नेचर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योस है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, राइट। और जब आप ये चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, यूट्यूब की जो रिकमेंडेशन है वो बीच बीच में फोमो वाली वीडियोस भी बहुत आती हैं, ठीक है, जिससे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। एंड अगर एक बार आपने कोई फोमो वाली वीडियो खोल ली, फॉर एग्जांपल आज मैं आपको अपना गूगल का ऑफिस दिखाऊंगा, आज मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप्स दिखाऊंगा, या फिर आज मैं आपको ये दिखाऊंगा, वहाँ से ना सारा उलट पुलट हो जाता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं जो फंडामेंटल्स हैं, एंड हम सीधा वो पढ़ना शुरू कर देते हैं जो वो पर्सन बता रहा है,
क्यों? बिकॉज़ भाई आपके लिए काम किया, आपको इतने का पैकेज मिला तो मेरे लिए भी काम करेगा। तो उस पॉइंट पे ना हम वो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो हमें पढ़नी नहीं चाहिए और ना उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है। क्यों? एक्सपेक्टेशंस है हाई पेइंग जॉब की और फिर हमें ना एक जल्दी लग जाती है कि मेरे को फटाफट ये ख़त्म करना है ताकि मेरी फटाफट एक जॉब लगे। ठीक है? दैट इज़ वेयर यू रूइन द थिंग्स और फिर क्या होता है पूरा साल ऐसे निकल जाता है फोमो के अंदर और फिर अगले साल एक न्यू वीडियो आता है रोड मैप का जिसको हम फिर से फॉलो करने का ट्राई करते हैं। तो भाई this is the time. Today is 1st January. You have a lot of time. You have good 1 year is enough to learn all these things. तो नंबर वन आई वुड से कीप योर सेल्फ डिस्ट्रैक्शन फ्री. ठीक है, फोमो में नहीं आना है. ग्रेट थिंग्स टेक टाइम. गिव एवरीथिंग अ टाइम. ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा जॉब वाला फेज भी आएगा, बट पहले अच्छे से पढ़ो. मार्केट में ना जॉब्स की कमी नहीं है, मार्केट में ना एक अच्छे टैलेंट की कमी है. ऑनेस्टली सेइंग दिस. ठीक है, सो आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा टैलेंट की कमी होने वाली है थैंक्स टू एआई. सभी के हाथ में कर्सर जैसे जो आईडीज फ्री में पकड़ा दिए हैं ना, इससे ना जो यंग डेवलपर्स हैं या फिर जो इन लोगों जो ये यूज़ कर रहे हैं ना वो और डम्ब हो रहे हैं. देखो, सीनियर लेवल डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए ये एक वरदान है. जो लोग ऑलरेडी ग्राइंड कर चुके हैं, जो आज फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, एक अच्छे लेवल के इंजीनियर्स हैं, दे शुड यूज़ कर्सर बिकॉज वो टाइम सेविंग है. लेकिन जो ये फ्रेशर्स हैं ना, इनको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए बिकॉज यू आर गेटिंग डम्प. आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसको एज असिस्टेंट यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसी से सारा काम करवाते हो और यू आर द असिस्टेंट. तो ये जितना भी लॉट है जो फ्रेशर्स सिर्फ और सिर्फ कर्सर जैसे आईडीज़ के ऊपर रिलाई करके कोड कर रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी रेलिवेंट हो जाएंगे मार्केट के लिए. एंड फिर मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा गैप होने वाला है ना फॉर दीज गुड डेवलपर्स, ओके, जिनको ये सारे फंडामेंटल्स आते हैं. सो प्लीज़ वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स. ओके, डोंट रश, डोंट हरी. सो वैसे तो देखो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी, ढूंढना पड़ेगा, फोमो से बचना पड़ेगा, बट जस्ट इन केस अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड पाथ चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए, प्लस यू वांट टू बिल्ड कंसिस्टेंसी, तो हमारा एक कोहॉर्ट भी आ रहा है 11 जनवरी से वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीकेंड क्लासेस हैं, मतलब कि सैटरडे एंड संडे 2 आवर्स की क्लासेस प्लस आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं एवरी एवरी वीक. ओके, तो उसमें क्या है, उसमें हम ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ही करेंगे. वो एक 6 to 7 मंथ्स का कोहॉर्ट है जिसके अंदर आप अपने जैसे और बच्चों से, अपने से और एंथुसियास्ट कोडर से मिलोगे. यू कैन पार्टनर विद देम, यू कैन ग्रुप विद देम, यू विल हैव एन एलुमनाई नेटवर्क विद देम एंड यू कैन लर्न विद अस. इसमें क्या होगा, नंबर वन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपको खुद से नहीं ढूंढना पड़ेगा. प्लस यू विल बी कनेक्टिंग विद लाइक माइंडेड पीपल जो आपकी ही स्टेज पे हैं, जो आपके जितने ही एंथुसियास्ट हैं. प्लस इसमें आपको एक कॉम्पिटिटिव भी फील होगा. क्यों? बिकॉज अगर आप एक बैच के अंदर हो, बाकी भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे आप पीछे रह जाओगे. तो यू विल ऑल्सो हैव दैट कॉम्पिटिटिव एज. तो जस्ट इन केस यू आर वांटिंग टू एनरोल इन दिस कोर्स, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट पिन में आप चेक कर सकते हो कोहॉर्ट का. इट्स piyushgarg.dev/cohort. ओके, सो जितना भी करिकुलम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. तो इस पर्टिकुलर उसमें क्या हम कवर करने वाले हैं. अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग, ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, अगर आप करना चाहते हो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब. इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, बट यू हैव टू सर्च थ्रू. आपको बहुत सारा डिग अप करना पड़ेगा एंड डिग करते करते हमेशा यूट्यूब आपको फोमो वाली वीडियोस दिखाएगा. तो मे बी इफ़ यू वांट टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग यू कैन वॉच दिस. तो इसमें वी आर 2 इंस्ट्रक्टर्स, हितेश सर and he has a channel with name Hitesh Chaudhary and Chai Code. You can check out that also. And this is me, एंड यू कैन चेक आउट दैट वॉट वी आर कवरिंग इन दिस कोहॉर्ट. ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो दैट हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं इस कोहॉर्ट के अंदर. अगेन इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा. मैं साफ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ तोड़ू फोड़ू नहीं है जो सिर्फ इस कोहॉर्ट में मिलेगा. ऐसा कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है. ठीक है, द ओनली सीक्रेट रेसिपी इज नंबर वन, यू गेट अ पर्सनल टच, यू गेट प्रोफेशनल गाइडेंस बिकॉज यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टिंग टू अस. प्लस आप थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर सकते हो. यू विल हैव अ रीजन टू ऑलवेज शो अप. ओके, सो दिस वॉज दी स्मॉल हेड्स अप. सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. So again, a very very happy new year to each one of you. I hope this year आप एक अच्छे डेवलपर बन पाए, आप एक अच्छी हाइपिंग जॉब्स को ग्रैब कर पाए, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू बिकम अ वेरी गुड फुल स्टैक डेवलपर with all your fundamentals clear. So all the best for your new year. And with that, let's end this video. Okay, bye bye and take care everyone. Don't make coding
डिप्रेसिंग। आई एम ग्लैड कि जब मैं कोडिंग सीख रहा था ना, तो इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर। हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड टुडे इज़ 31st December, द लास्ट डे ऑफ द ईयर। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आई वॉन्ट टू शेयर सम थॉट्स विद यू। इस वीडियो के अंदर आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कोडिंग बहुत ईजी है। आई वॉन्ट टू शेयर सम पॉइंट्स विद यू, सम एक्सपीरियंसेस विद यू, जिससे यू रियलाइज कि एक्चुअली में कोडिंग से आसान कुछ नहीं है एंड कोडिंग इज रियली फन. सो nowadays I can see that many young talent is jumping into the coding. So everyone wants to become a coder, they want to become a good builder and eventually एक high paying job के अंदर land करना चाहते हैं. But the problem is that once they are into this field, जब वो एक learning phase में आते हैं, they feel depressed, they feel left out, they feel कि शायद coding उनके लिए नहीं बना है, right? And there is a serious problem behind this which I'll share. So इस particular video के अंदर मैं आपके साथ कुछ points share करूँगा जो आपकी coding journey को बहुत easy and fun बना देगी. So with that, let's start with the video. So see, सबसे पहले ना कोडिंग को ना एक सब्जेक्ट से कंपेयर मत करो. दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. ओके, जब तुम कोडिंग को एक सब्जेक्ट मानते हो ना, जस्ट लाइक जेई या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट, दैट इज़ वेयर यू एक्चुअली मेक कोडिंग एज डिप्रेसिंग. कोडिंग कभी भी इतनी डिप्रेसिंग नहीं है जितने बाकी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर ना थ्योरी बहुत होती है, रट्टा बहुत होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव चीज़ें होती हैं. यू जस्ट हैव टू मग अप द थिंग्स, यू हैव टू लर्न थिंग्स, चाहे तुम्हें वो इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे. लेकिन कोडिंग ऐसा नहीं है. कोडिंग इज़ लाइक अ फन टूल, इट्स लाइक अ सुपर पावर फॉर यू, जिससे तुम कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, राइट? अगर तुम थोड़ा सा एक लो लेवल के ऊपर सोचो, तो कोड करके, विच इज़ जस्ट लाइक बाइनरी, जिसमें सिर्फ जीरोज एंड वंस होते हैं, अगर तुम कोड करते हो, तुम इंटरनेट के ऊपर एक रियल लाइफ इम्पैक्ट डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज गूगल मैप्स, विच इज़ जस्ट अ कोड, राइट? गूगल मैप्स क्या है? सिर्फ एक कोड है. अगर वो डाउन चला जाता है या फिर उसमें कोई बग आता है, तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग अपनी लोकेशन तक सही से पहुंच नहीं पाएंगे. दे विल गेट लेट, राइट? या फिर अगर आज वो एक अच्छा बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन डाल देते हैं, तो लोग अपनी जगह पे जल्दी पहुंचने लग जाएंगे. सो इफ़ यू थिंक अबाउट दिस, कि जस्ट एक इंजीनियर अपने घर पे बैठ के या फिर एक गूगल के ऑफिस में बैठ के सिर्फ एक लाइन लिखता है कोड की, उससे लोगों की रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है. अगर आप इस तरह से कोड लिखोगे कि यार ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये रियल वर्ल्ड में कैसे लोगों को इम्पैक्ट करता है एंड कितना फन है ये, तो देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कोडिंग कितना फन है. ओके, सो नंबर वन थिंग इज कि भाई कोडिंग को ना प्लीज़ किसी भी जेई जैसे सब्जेक्ट के साथ कंपेयर मत करो. कोडिंग इज़ जस्ट अ फन टूल जो तुम पूरा दिन पूरी रात कर सकते हो. ओके, सो विद दैट एक काम करते हैं, लेट मी टेल यू फ्यू 10 to 11 पॉइंट्स जो तुम्हारी कोडिंग जर्नी को और आसान बना देंगे. इट्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड. सो नंबर वन दैट आई हैव फॉर यू इज मास्टर दी फंडामेंटल्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लर्नर्स सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि वो फोमो में आ जाते हैं. ओके, फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट. उन्हें लगता है कि जो वर्ल्ड है ना वो बहुत फास्ट भाग रहा है एंड वी आर लेफ्ट बिहाइंड, हमें फटाफट कैचअप करना है, जिसके चलते वो फंडामेंटल्स को मास्टर करना भूल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू नो दैट नाउ डेज नेक्स्ट ईयर्स बहुत हाइप्ड अप है, राइट? एवरीवन इज वर्किंग इन नेक्स्ट ईयर्स, एवरीवन इज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इन नेक्स्ट ईयर्स. लेकिन नेक्स्ट ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि तुम डायरेक्टली यूट्यूब पे जाओ या फिर तुम कोई कोर्स खरीदो और तुम सीधा नेक्स्ट ईयर्स लर्न करना शुरू कर दो. नो, अगर तुम ऐसा करोगे यू विल फील डिप्रेस्ड, यू विल फील कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यार मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बाकी लोग बस एक दो मिनट में एक दो वीडियोस देखते हैं और वो समझ लेते हैं और बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, एंड यहाँ पर मेरे से एक सिंपल वेब पेज नहीं बन रहा, मेरे से एक सिंपल नेक्स्ट ईयर्स प्रोजेक्ट नहीं बन रहा. रीज़न, आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर्स पढ़ना है तो पहली चीज़ है दैट आप जावास्क्रिप्ट को पढ़ो, प्लेन जावास्क्रिप्ट. ओके, वेनिला जावास्क्रिप्ट जिसको कहते हैं. फिर आप धीरे धीरे रिएक्ट की तरफ ट्रांजिशन करो. आप रिएक्ट को समझो कि रिएक्ट अंडर द हुड कैसे काम करती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, री रेंडरिंग कैसे काम करती है, रिएक्ट क्यों ही है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डॉम कैसे काम करता है, रिएक्ट जितना भी क्लाइंट रेंडरिंग करती है वो कैसे करती है. देन ट्रांजिशन टू नेक्स्ट ईयर्स, देन यू विल अंडरस्टैंड. बट प्रॉब्लम क्या है, हम डायरेक्टली रिएक्ट या फिर हम डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर्स करना चाहते हैं. क्यों? बिकॉज ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, कंपनीज उसको एज अ रिक्वायरमेंट मान रही है, तो डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर सीखो और कंपनी में प्लेस हो जाओ. हमारा मोटिव ही गलत है ना, हम सीखना ही नहीं चाहते. हमारा मोटिव क्या है कि भाई कंपनी जिस चीज़ के ऊपर पैसा देना चाहती है हम डायरेक्टली वो सीखना चाहते हैं. देखो, मैं अगर अपनी बात करूं या फिर मेरे जैसे और क्रिएटर्स की बात करूं, हम रिएक्ट वगैरह बहुत पहले से कर रहे हैं.
जब रिएक्ट बिल्कुल आई थी, हम तब से रिएक्ट कर रहे हैं, तब कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो अगर आज कोई भी एक नया फ्रेमवर्क या फिर कोई भी एक नई लाइब्रेरी आती है रिएक्ट की, हमें वो कैचअप करने में काफ़ी आसानी होगी, बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड, इन दिस रिएक्ट फील्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। रिएक्ट एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, ओके। लेकिन अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो, डोंट गो विद द हाइप, ऑलवेज मास्टर दी फंडामेंटल्स, ओके। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी टेक्नोलॉजी, चाहे आप बैक एंड करना चाहते हो, फ्रंट एंड करना चाहते हो, डेटा बेसिस करना चाहते हो, डिज़ाइन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, this is true for every field. So this was our number one point. Second, always think first, coding is the easiest job. यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम क्या देखा है कि लाइक अगर आपको कुछ भी बिल्ड करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉब्लम को ना एक होल देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे, लेट्स से अगर आपको वर्सल जैसा कुछ बिल्ड करना है, ठीक है, तो यू विल थिंक यार वर्सल जैसा अगर कुछ बिल्ड करना है तो उसमें मेरे को डिप्लॉयमेंट चाहिए, लॉग्स चाहिए, मेरे को उसमें कोलैबोरेशन फीचर्स चाहिए, मेरे को उसमें प्रीव्यू डिप्लॉयमेंट चाहिए, मेरे को उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए, मेरे को उसको स्केल भी करना है, मेरे को CDN भी लगाना है, मेरे को कैशिंग भी करनी है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, एंड डायरेक्टली यू जंप ऑन टू द कोडिंग। इससे क्या है, नंबर वन, यू हैव क्रिएटेड अ क्योस इन योर माइंड। तुमने प्रॉब्लम को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना लिया अपने माइंड के अंदर। प्लस अब जब तुम उसको कोड करने लगोगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा शुरू कहाँ से करना और ख़त्म कहाँ से करना है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो कोडिंग इज़ द लास्ट एंड द ईजिएस्ट जॉब। सबसे पहले उसको सोचो, करना क्या है, व्हाट आर यू बिल्डिंग। पेन डाउन करो अपने थॉट्स को। तो अभी भी लाइक यू कैन यूज़ अ सिंपल कॉपी एंड अ पेन। फॉर एग्जांपल, सी मैं एक सिंपल कॉपी पेन यूज़ करता हूँ फॉर पेन डाउनिंग माय आर्किटेक्चर्स। तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि इफ़ यू कैन सी दैट मैं आज भी हर चीज़ पहले पेन डाउन करता हूँ, या फिर मैं इरेजर आयो जैसे टूल्स को यूज़ करता हूँ, विच इज़ इंजीनियरिंग स्पेसिफिक जो बने हैं। तो पहले आप अपने थॉट्स को, अपने आर्किटेक्चर को ना पेन डाउन करो कि आप करना क्या चाहते हो, आपका क्या फ्लो रहेगा। जब आप थॉट्स को पेन डाउन करते हो या इरेजर.io जैसे एप्लीकेशंस के ऊपर उसको बिल्ड करते हो ना, आपके माइंड में ना क्लैरिटी आती है, आपको फ्लो समझ आता है, आपको जो फ्लॉज होते हैं वो वहीं पे समझ आ जाते हैं। तो सबसे पहले वो करो, हैव डिस्कशंस विद चैट जीपीटी, हैव डिस्कशंस ऑन द इंटरनेट। उसके बाद आप और जो सिमिलर काइंड ऑफ स्पेस के लोग हैं, आप गूगल करो। तो पहले हर चीज़ ना कलेक्ट करो, आपका आर्किटेक्चर कलेक्ट करो, आपकी नॉलेज कलेक्ट करो, आप अपने स्किल्स को कलेक्ट करो, आप उसके अंदर क्या टेक स्टैक यूज़ करने वाले हो वो कलेक्ट करो, अगर उसमें कोई नॉनसेंस है वो कलेक्ट करो। ऐसी कंपनी के इंजीनियरिंग ब्लॉग्स पढ़ो कि किस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो उस चीज़ को कलेक्ट करो। कलेक्ट ऑल द रिसोर्सेज। वंस यू थिंक कि मैंने सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो कि भाई सबसे पहले ना, अगर मेरे को वर्सल जैसा एक एप्लीकेशन बनाना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयमेंट्स को सॉल्व करूँगा। या देखो, वर्सल इतने सालों से इंडस्ट्री में, राइट, आई थिंक मे बी 8 to 10 years, ज़्यादा भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कितना है। लेकिन आज जो वर्सेल जैसी कंपनीज है ना, वो ओवर टाइम बनी है, पहले दिन से उनके पास सारे फीचर्स नहीं थे। तो उनका कोर क्या है कि वो डिप्लॉयमेंट्स को ईजी करते हैं। तो यू ऑल्सो बिल्ड दैट ना, कि हम मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो डिप्लॉयमेंट्स को ऑटोमेट करता है। देन ऐड ऑन उसमें कोलैबोरेशन डालो, देन ऐड ऑन उसके अंदर तुम लॉग एग्रीगेशन डाल सकते हो, ऐड ऑन उसमें एनालिटिक्स डाल सकते हो, फिर एज एन ऐड ऑन तुम उसमें गिटहब इंटीग्रेशन दे सकते हो। दीज आर जस्ट ऐड ऑन्स, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ना पहले दिन से पूरी नहीं होती है। सो ऑलवेज ब्रेक डाउन योर प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम चंक बाय चंक, प्रायोरिटाइज कि क्या मुझे पहले बिल्ड करना है, क्या मुझे एज अ एड ऑन बिल्ड करना है। एंड जब तुम इस तरह से कोड करोगे, यू विल नो वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड, एंड किस तरह से चीज़ों को कलेक्ट करना है। एंड तुम्हें पता भी नहीं लगेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाते 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 तुम्हारा क्या, कितनी सारी न्यू चीज़ें तुम सीख जाओगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लेट से कुछ कैशिंग करना है, तो तुम्हें कैशिंग का कोई आइडिया नहीं है, तो जब तुम गूगल जाओगे, कैशिंग के बारे में पढ़ोगे, अपने आप रेडिस आएगा, तुम अपने आप रेडिस को इंप्लीमेंट करोगे। तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज लर्न वाइल डूइंग, लर्न ऑन द गो, एंड दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग दैट यू कैन डू, एंड उसमें मज़ा भी आएगा। देखो, अगर मेरे को कोडिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना है ना, मैं तुम्हें पता क्या करूँगा, मैं तुम्हें बोलूँगा कि ये लो रेडिस, इसको पढ़ो, ये लो बैकएंड, आज हम ये पढ़ेंगे, ये लो नेक्स्ट आज हम ये पढ़ेंगे, ये लो रिएक्ट, आज हम ये पढ़ेंगे। तुम्हें ओवरवेलमिंग फील होगा, यू विल बी लाइक कि क्यों पढ़ रहे हैं हम ये। अभी मसा मसा तो मेरे को मतलब थोड़ा थोड़ा नोट जे शुरू समझ आने लगा था, थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस समझ आने लगा था, एंड अब तुमने उसमें रेडिस डाल दिया, अब तुमने उसमें डेटाबेस डाल दिया। जब डेटाबेस ऑलरेडी है ही है, तो हम रेडिस क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब रेडिस की कमांड्स पढ़ूँ या डेटाबेस की कमांड पढ़ूँ। जब डेटा फ्लो हो रहा है, तो हम डेटाबेस में से डेटा उठा के रेडिस में रख रहे हैं, फिर रेडिस में से उठा के यूज़र को क्यों दे रहे हैं। ओवरवेलमिंग लगेगा ना, क्यों, बिकॉज तुम्हें समझ ही नहीं आ रही चीज़ें, बिकॉज एकदम से मैंने डाल दी, करेक्ट। सो दैट इज़ नॉट हाउ यू लर्न। ऐसे पढ़ोगे तो पक्का डिप्रेस हो जाओगे। तो देखो, जब मैं बैकएंड पढ़ रहा था, मेरे को रेडिस का आइडिया भी नहीं था कि रेडिस ऐसा कुछ होता भी है। मैं उसके बाद जब हमने जब मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप लगी, तो वहाँ पे दे सेड कि यार हमें ना कुछ कंप्यूट करना है, तो हम एनालिटिक्स करते थे वहाँ पे।
तो एनालिटिक्स के अंदर हमें कंप्यूटेशन करना होता है। तो मैं क्या कर रहा था, मेरे को रेडिस का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, मेरे को कैशिंग का कोई आइडिया नहीं है। तो हम सारे टेबल्स का ऐड करते थे, इट वाज अ सम एग्रीगेशन एंड हम फ्रंट एंड पे देते थे। तो उसके बाद मेरे सीनियर ने कहा कि यार एक बात बताओ, अगर हमारे टेबल के अंदर कुछ 1000 रोज भी आ जाए, बहुत सारी 1000 रोज डेली ऐड हो, तो यार हमारा तो रोज़ जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा। हम डेली क्या कर रहे होंगे, हर हर यूज़र के रिफ्रेश के ऊपर हम सारे के सारे रोज़ को ऐड कर रहे होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा सर हम एक काम करते हैं ना, कंप्यूट करके रख लेते हैं पहले ही। दे सेड वेरी गुड, लेकिन कहाँ रखेंगे? तो दैट इज़ वेयर रेडिस जैसी चीज़ें आती है कि ठीक है, हम सारी चीज़ों को कंप्यूट करके एक इन मेमोरी डेटाबेस लाइक रेडिस में रख सकते हैं। यहाँ पर भी डायरेक्टली रेडिस नहीं आएगा। यहाँ पर आंसर क्या था कि हम ना मेमोरी में रख लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट, जैसे हम बना सकते हैं लेट टोटल इक्वल्स टू समथिंग। तो जब भी यूज़र रिफ्रेश करेगा तो क्या होगा, हम वहाँ से उठा के दे देंगे। और हम वहाँ पे एक टाइम स्टैम्प भी रख लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंप्यूटेड वैल्यू है ये मैंने 10 मिनट पहले रखी थी, तो अगर 10 मिनट से ज़्यादा हो गया तो मैं वापस कंप्यूट कर दूंगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया, ये तो बिल्कुल सही सोल्यूशन है, काम करेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया, वो कहते हैं कि अगर हमारा स्केल बहुत ज़्यादा है तो हमारे नोड इंस्टेंसेस भी तो स्केल करेंगे ना। देयर विल बी मल्टीपल इंस्टेंसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग, सॉरी जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, राइट। तो अब हमें नहीं पता कि यूज़र कौन से वाले उससे कनेक्ट होगा, राइट। हमें नहीं पता ना कि यूज़र कौन से इंस्टेंस से कनेक्ट हो सकता है। तो वो कहते हैं कि यार हमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड कैश चाहिए, हमें एक ऐसा कैश चाहिए जो सारे इंस्टेंसेस के अंदर कॉमन हो। तो दैट इज़ वेयर योर रेडिस जैसी चीज़ें कम्स इन। तो देखो धीरे धीरे जब तुम ट्रांजिशन करते हो ना, तुम्हें समझ आता है कि ये रेडिस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। नॉट बिकॉज कि हाइप्ड अप है, हर कोई यूज़ कर रहा है, या फिर ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, या फिर कंपनीज रेज्यूमे में मांग रही है, नहीं। यू शुड नो वाई यू आर यूजिंग इट, तो तुम्हें मज़ा भी आएगा। ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट ऑलवेज थिंक फर्स्ट, एंड कोडिंग इज द ईजिएस्ट जॉब। नेक्स्ट, देखो अगर आप कुछ भी कोड कर रहे हो ना, हार्ड चीज़ें आएंगी, ठीक है, मुश्किल चीज़ें आएंगी जब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यार इसको मैं कैसे कोड करूँ, इसका मैं आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन करूँ। द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ से उठो, बाहर जाओ, वॉक पर जाओ, जिम जाओ, बिकॉज जितनी भी आपकी जो थिंकिंग है ना, वो कहाँ पे होगी बेस्ट, जब आप यहाँ से उठोगे, जब आप इस वर्क स्पेस से उठ के बाहर जाओगे। तो जो थिंकिंग का प्रोसेस है ना, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ कामनेस, अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड अ लॉट ऑफ माइंड पावर। मैंने आज तक जितनी भी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की है, जितने भी मेरे यूट्यूब पे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन सब के आइडियाज़ या तो मेरे को जिम में आए हैं या फिर मेरे को वॉक पे आए हैं, ठीक है। बिकॉज वेन यू आर सिटिंग हेयर यू आर जस्ट कोडिंग, आप एक कमरे के अंदर बंद हो, यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द स्क्रीन एंड कोडिंग। यहाँ पे कुछ भी बाहर से सोचना, डिज़ाइन करना इज़ नॉट दैट पॉसिबल। सो उठो, बाहर जाओ, जब भी आपको लग रहा है यार एरर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे स्टक हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या 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 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस एरर से हम बाहर निकल सकते हैं। ऑलवेज स्टेप आउट, ओके, ऑलवेज स्टेप आउट। और ये 100% ऑफ द टाइम्स काम करता है। सो दिस इज़ वन थिंग। नेक्स्ट, ट्राई टू राइट क्लीन, रीयूजेबल एंड रीडेबल कोड। एक कोड मैंने कहीं पढ़ा था, एनी मंकी कैन राइट अ कोड विच कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड, बट ओनली रियल प्रोग्रामर्स कैन राइट अ कोड विद अदर ह्यूमंस कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। देखो अगर, देखो क्रिएटिविटी ना आपके आसपास से आती है, अगर आपके आसपास की चीज़ें क्योस है ना, तो आप अच्छा कोड, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। सेम थिंग गोज़ फॉर द कोड। जब आप कोडिंग कर रहे हो, अगर आपने अपने पूरे कोड बेस की बैंड बजा ही दी है, अगर आपने पूरा कोड बेस का जो कोड है वो बहुत ही बुरे तरीके से लिखा है ना, तो अगला अगर आप कोई भी फीचर इंप्लीमेंट करोगे ना, आप उसमें बहुत ही बुरे तरीके से ही कोड करने वाले हो, बहुत ही बुरे तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। क्यों? बिकॉज नाउ यू आर इन अ टेक डेट, तुम उस चीज़ में फंस चुके हो। अब तुम्हें बस ये होगा कि मैं कैसे भी करके गंदा कोड या अच्छा कोड बस इसको चलता कर दूँ, ठीक है। बट वंस यू स्टार्ट राइटिंग क्लीन रीयूजेबल कोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर आप यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ की क्लासेस बना रहे हो, हर चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जब आपको कोई नया फीचर इंप्लीमेंट करने का मन भी करेगा ना, तो आप उसको बहुत अच्छे और एफिशिएंट और एक फ़न वे के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। उससे क्या है, नंबर वन आपकी हैबिट अच्छी है, चीज़ों को ऐड करना आसान है, चीज़ें रीयूजेबल है तो आपको कोड करने में भी मज़ा आएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट क्लीन, रीयूजेबल एंड रीडेबल कोड। नाउ आई नो कि घर बैठने से या फिर ऐसे ही आपको नहीं पता कि क्लीन कोड और नॉट क्लीन कोड में फ़र्क क्या होता है, किस तरह के डिज़ाइन पैटर्न्स आप यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को उठा सकते हो। आज भी अगर मेरे को किसी भी चीज़ का आर्किटेक्चर या फिर कोड को किस तरह से प्लेस किया गया है, कोड को किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, अगर आज भी मेरे को वो चीज़ देखना होता है तो मैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स की तरफ जाता हूँ। आई सी हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड द कोड एंड नॉट जस्ट वन ओपन सोर्स, मल्टीपल ओपन सोर्स रिपोजिटरीज। तो वहाँ से मेरे को एक आइडिया मिलता है कि या दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया।
बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कोड को एब्स्ट्रैक्ट किया, इनहेरिटेंस का यूज़ किया, एंड किस तरह से कोड को रीयूजेबल बना रहे हैं, दैट इज़ वेयर यू लर्न। सो कोड करना ही बहुत नहीं है, ऐसा कोड करो कि वो क्लीन हो, रीयूजेबल हो, आपका भी मन करे पढ़ने का। एंड जब वो क्लीन कोड में आप काम करते हो ना यार, ब्रेन मल्टीपल पावर, मतलब 2x पावर से काम करता है। आपका जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो 2x पावर से काम करता है। बिकॉज एक बार आप किसी क्योस फाइल के अंदर काम करके देखना, आपका ब्रेन भी काम नहीं करेगा। ओके, सो ऑलवेज कीप योर कोड वेरी क्लीन, वेरी यूजेबल। एंड एज अ प्रोफेशनल एडवाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस वगैरह को यूज़ करो। सो दिस इज़ वन मोर एडवाइस। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड डीबगिंग। देखो, आजकल मैंने क्या देखा है कि जो नए यंग डेवलपर्स हैं ना, उनको शिप करने में बहुत मज़ा आता है, विच इज़ अ गुड थिंग। दे डोंट डीबग। ओके, डीबग कहते ही नहीं है बस कोई भी चीज़ कोड किया, अगर वो चल रहा है तो बस ठीक है, फटाफट इसको शिप करो, नहीं। ऑलवेज डीबग योर कोड, ऑलवेज थिंक ऑफ एज केसेस। देखो, वापस से बात कहाँ घूम कर आई कि थिंक करो, सोचो। कोड करने से पहले सोचो कि मैं क्या कोड कर रहा हूँ, क्या इसके एज केसेस हो सकते हैं, क्या इसके नॉन हो सकते हैं, कहाँ मेरा कोड फट सकता है। ऑलवेज थिंक। और कोड करने के बाद भी ना उसको रिगरसली टेस्ट करो। डोंट बी सेल्फ ऑब्सेस्ड कि मैंने कोड कर दिया एंड यू नो एवरीथिंग विल वर्क फाइन, नहीं। हमेशा वहाँ पर एज केसेस होंगे, तो डीबगर को यूज़ करना सीखो। ठीक है, ऐसे console डॉट लॉग हेयर 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 दिस इज वर्किंग 1 2 3 ऐसे नहीं होता है। ऑलवेज अंडरस्टैंड डीबगर, डीबगर टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को आप सीखो। ठीक है, जो बिल्ट इन हमारे आईडी के डीबगर्स होते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड स्किल। वंस यू स्टार्ट डीबगिंग ना, एक बार अगर आपने डीबगर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ना, नंबर वन, इट इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी, इट इंक्रीजेज योर स्पीड, इट्स अ मोर मैनेज्ड वर्कफ्लो, प्लस देर इज नो गोइंग बैक। सो डीबगर्स को सीखो। एंड कितना मुश्किल है यार, कोई भी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखो, नहीं तो अगर आपको मैं बना दूंगा, एक 30 to 45 मिनट्स के अंदर आप पूरा एक डीबगर मास्टर कर सकते हो। सो लर्न डीबगर। ओके, नेक्स्ट, कीप लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड बी एक्टिव इन द कम्युनिटी। सो एक चीज़ मैंने क्या बोला था शुरू में, मास्टर द फंडामेंटल्स। अच्छी बात है, यू शुड फर्स्ट मास्टर योर फंडामेंटल्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फंडामेंटल्स तक ही रह जाओ। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू चीज़ों के बारे में कैसे पता लगता है, व्हेन यू आर एक्टिव इन कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल, मैं ज़्यादातर एक्टिव ट्विटर के ऊपर हूँ, एंड ट्विटर हैज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक कम्युनिटीज़। जितने भी सीरियस फाउंडर्स हैं, सीरियस प्रोग्रामर्स हैं, सीरियस लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, जिनको मैं पर्सनली एडमायर करता हूँ, दे ऑल आर एक्टिव ऑन ट्विटर। तो ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहो, राइट पीपल को फॉलो करो, सी व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर बिल्डिंग, व्हाट दे आर इनटू। एंड यूजुअली आजकल ट्विटर स्पेसेस भी बहुत होती हैं, जॉइन दोस ट्विटर स्पेसेस, टॉक अबाउट टेक। ठीक है, बात करो कि भाई मैं आजकल इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूँ, एंड जब भी कोई सामने वाला किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, उसको नोट डाउन करो, अरे यार दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी, ओके, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, इसके बारे में मैं रिसर्च करूंगा। सो बी एक्टिव इन द कम्युनिटी, एंड आई फील ट्विटर इज द बेस्ट कम्युनिटी एज ऑफ टुडे। सो ट्विटर के ऊपर आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए। लिंक्डइन के ऊपर आई वुड से कम एक्टिव रहो, बिकॉज लिंक्डइन में ना फोमो बहुत है। लिंक्डइन पे ना फालतू का मोटिवेशन है, आई वुड से। ठीक है, सॉरी टू से इफ इट इज़ हर्टिंग यू, बट दैट्स ट्रू। लिंक्डइन के ऊपर बहुत ही फालतू का मोटिवेशन है। आई डोंट नो, वहाँ पे बस ऐसा है कि यू नो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब डू दिस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब डू दैट, इनसाइटफुल फालतू के लोग पोस्ट कर रहे हैं, नहीं। ट्विटर के ऊपर आओ, यू विल गेट अ रियलिटी चेक। पीपल शेयर वॉट दे आर एक्चुअली डूइंग, सो बी एक्टिव ऑन ट्विटर एज ऑफ नाउ। एंड अगर आपको पीयर टू पीयर कनेक्ट करना है तो डिस्कॉर्ड इज ऑल्सो अ गुड थिंग। सो दिस इज वन थिंग, बी एक्टिव इन द कम्युनिटी। ठीक है, एंड कम्युनिटी में एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर भी जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चंस वगैरह के बारे में पूछ रहे हो कि यार मैं जॉब कैसे लूँ, मेरे को हाई पेइंग जॉब चाहिए, नहीं यार। देखो, टॉक अबाउट टेक, टॉक अबाउट बिल्डिंग, टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स, टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स, टॉक अबाउट आइडियाज़। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बात करो, नहीं ना कि मेरी जॉब है मैं कैसे लूँ, या फिर मेरे को जॉब करना है, या फिर मेरे को वो इतना पैकेज दे रहा है मेरे को इतना बढ़ाना है। नहीं यार, दीज ऑल आर सेकेंडरी, दीज ऑल कम, लाइक दीज ऑल कम कॉम्प्लीमेंट्री, वो अपने आप आएगा। आप नई चीज़ों के बारे में बात Yo, करो। bro, ओके, what's सो up? दिस इज़ वन थिंग। एंड How's your वन day वेरी going, इंपॉर्टेंट bhai? पॉइंट जो थोड़ा सा मतलब यू नो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, या फिर जो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, हैव अ साइड हसल। देखो, आप जब कंपनी में काम कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। डेडिकेट 100% ऑफ योर टाइम इन द कंपनी। अगर आपकी कंपनी के वर्किंग आवर्स लेट्स से 9 to 5 है या 9 to 6 है, दोज 9 to 6 शुड गो इन डीप वर्क ऑफ दैट कंपनी। लेकिन हैव अ साइड हसल। सैटरडे संडेज को आप किसी अपनी साइड हसल के ऊपर काम कर सकते हो। एंड साइड हसल का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कोई स्टार्टअप बना रहे हो। इट्स नॉट लाइक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाओ और फटाफट कंपनी से निकलो, नहीं।
साइड हसल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल ब्लॉग लिखना आपका साइड हसल हो सकता है। तो आप जो भी कंपनी में सीख रहे हो, इफ़ यू आर वर्किंग 5 to 6 days अ वीक एंड यू आर वर्किंग 9 to 6, आप जो भी कंपनी में सीख रहे हो आप उसके ब्लॉग्स लिख सकते हो। आप ट्विटर के ऊपर अपनी लर्निंग्स पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का एक छोटा प्रोजेक्ट बना सकते हो विच हेल्प्स यू इन लर्निंग समथिंग। आप कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो साथ साथ, आप कुछ कम्युनिटी में कुछ आप गिव बैक कर रहे हो, आप कोई क्लासेस ले रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, Mm, I don't think I'll be ever, post any videos. I'll just stick to streams because I used to actually post videos, but short reels in Instagram. But it took so long to edit, I didn't have any time left, so I left it. दे हैव अ ग्रुप, तो वो डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहते हैं, तो डिस्कॉर्ड में वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो ऑलवेज हैव अ साइड हसल। सिर्फ कंपनी का 9 to 6 काम करोगे तो वो भी बोरिंग लगने लग जाएगा, एंड यू विल फील कि यार ये कैसा लाइफ है, मतलब आई एम जस्ट स्टक इन अ लूप। ठीक है? सो हैव अ साइड हसल, दैट कैन बी एनीथिंग। यू कैन स्टार्ट विद राइटिंग ब्लॉग्स, दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ साइड हसल दैट यू कैन हैव। एंड एट द एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ठीक है? कोडिंग करो, कोडिंग इज़ वेरी फन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन कोडिंग करो। हैव ब्रेक्स, गो टू वॉक, गो टू जिम। ठीक है? सो दिस इज सिंपल वन। ठीक है? मतलब इसके ऊपर हम जितना विचार करें उतना कम है। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज कोडिंग इज़ अ सिटिंग जॉब। अगर आप पूरा दिन बैठे रहोगे तो यू माइट डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो यार देखो, जब भी सोचना है उठो, जिम जाओ या फिर वॉक पे जाओ। सो दिस बेसिकली गिव्स यू अ गुड हेल्थ प्लस थिंकिंग कैपेसिटी। सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट। सो अगेन यार, एट द एंड मैं यही कंक्लूड करूँगा कि प्लीज़ आप कोडिंग को जेई जैसे चीज़ों के साथ मत कंपेयर करो। डोंट मेक कोडिंग डिप्रेसिंग। आई एम ग्लैड कि जब मैं कोडिंग सीख रहा था ना, तो इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर। ओके, सो तब ना कोडिंग को एज अ फन कोडिंग की तरह ही पढ़ाया जाता था। आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये सीखेंगे, आज हम वो करेंगे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली कोडिंग एक सब्जेक्ट बन चुका है, एक ऐसा चीज़ बन चुका है कि कोडिंग कर लो, नहीं तो ये नहीं होगा, अगर कोडिंग नहीं करोगे तो इतने का पैकेज नहीं लगेगा। एंड पैकेजेस हर कोई आजकल फ्लॉन्ट करता है, जिससे क्या होता है कि अगर आपको एक कम पैकेज मिल रहा है तो यू आर नॉट एबल टू रिस्पेक्ट दैट। ठीक है? यार हमारे टाइम पे हमने बहुत ही कम पैसों पे भी काम किया है, जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग कम है, लेकिन तब हम उसमें हैप्पी थे। लाइक वी यूज टू फील प्रिविलेज कि यार वाओ, आई मीन वी आर गेटिंग समथिंग फॉर कोडिंग। लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर किसी फ्रेशर को आप 12 LPA या फिर 10 LPA भी दोगे ना, तो ही विल फील यार ये तो नहीं है, यार मैं तो ट्विटर पे एक्टिव हूँ, मैं तो यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, मैं तो देख रहा हूँ यार बाकी तो 1-1 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं, तो वो अपने 10 लाख की भी वैल्यू नहीं कर पाता। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। ओके, सो प्लीज़ don't compare your chapter 1 with someone else chapter 10. Okay, always work about upskilling yourself, building new things, and be excited and be curious in this field. ठीक है? जब आपको 5-6 साल हो जाएंगे ना, उसके बाद बात करेंगे कि लाइक हाउ मच यू डिजर्व, हाउ मच शुड बी योर इंक्रीमेंट, आपका पैकेज कितना होना चाहिए। बट एज अ फ्रेशर आई वुड से बी क्यूरियस, बी एक्साइटेड, एंड जस्ट कीप शिपिंग न्यू थिंग्स अलॉन्ग विद ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव सेड। ओके, एंड अगर आपको कंपनी कुछ भी पे कर रही है, 6 LPA 10 LPA, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। ओके, so with that, let's end the video. And once again, happy new year to everyone. I hope 2025 brings you a lot of new opportunities plus a lot of new learnings. Okay, so coding करते रहो, coding से fun और कुछ नहीं है। coding is a really fun thing. coding क्या है? एक टूल है जिससे आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। सो कोडिंग एक सब्जेक्ट नहीं है, मैं बार बार के तक बता रहा हूँ। कोडिंग को एज अ सब्जेक्ट नहीं, इट्स लाइक अ गेम। या गेम भी तो खेलते हो ना, जब आप गेमिंग करते हो 10-10 घंटे तो थकते हो नहीं ना? गेमिंग के अंदर भी तो कितनी फ्रस्ट्रेशन आती है, जब गेम के लेवल्स नहीं निकलते, जब आप बताओ भाई, बार बाय बार द विलन वे से बोल के हारते हो, छोड़ जब आप दिया। बार बार आउट होते हो, बार बार मारे जाते हो गेम के अंदर, तो भी तो बार बार ट्राई करते हो ना? तो वाई नॉट? धन्यवाद, ठीक है। हाँ। शुभ्र ने लाची भाई। Yes, yes, I'm here. বলছি একটা বিলিয়ন ডলার টেক কোম্পানি স্টার্ট করবেন? कि ना नाम बिलियन डॉलर भाई। अच्छा, मजाक।
না না $1 billion না আসলে $1 billion পয়সা কামাতে হবে ওদের থেকে বিলিয়ন মানে ডলার? হ্যাঁ, বিলিয়ন বিলিয়ন উইথ বি বিলিয়ন ডলার। গ্রাইন্ডার, এই ভিডিওটা দেখবি হেভি। ডিসকর্ড। We can go out and scream from the mountaintops about Perplexity, but it is a lot better when someone else is telling you to use it or it is being bundled into an existing product of yours. You need someone to hear about your product 3 to 7 times before they're going to give it an honest trial. If I can get a user on Perplexity specifically to 3 queries in that first session, well, now I know I'm really onto something. Everyone in growth is looking for alpha. There's no middle ground if you're not first. It literally just means your only other option is to just be a lot better than everyone else. Ready to go? Raman, it is so lovely to finally do this. Thank you so much for joining me today. Thank you for having me. This will be so much fun. Dude, I want to start with, you mentioned before you were brought up in Alabama. How the fuck does a kid from Alabama get to being head of growth at Perplexity? Like, not obvious. I have no clue. I have no clue. I had a great family that really pushed all of us to get out of Alabama to go do cool stuff. And, you know, here I am in San Francisco working at a really, really fun company. I love that. But you were in an MBA program, and a lot of people are at MBA programs who want to move into startups. You founded a startup. What happened there? What's your advice to others in MBA programs wanting to get into startups? Yeah, MBAs have such an interesting reputation in tech. Most people just absolutely hate them. I personally, even though I left a year early in the MBA, I had a great experience, right? Like, I got there, I came to tinker with ideas. I never took an interview, started playing around with all my different ideas. You can get funding from the school. So it's essentially like a pre-seed, and you're just tinkering full time. And conversations start flowing, and it became very clear, like, I'm going to learn a lot more. I'm going to have such a better experience if I just go full steam ahead on this idea. And that was it. I mean, it was amazing. Would you recommend MBAs to others? I think MBAs make a lot of sense for people who are trying to break into a specific industry. Like, if you are trying to break into private equity, or you want to be a PM at Amazon or go into McKinsey, then MBAs have like your preset path, and you just follow your guidelines. You have a community to work with and prep for, and you'll hopefully get in. So it's a very like expensive bridge to breaking into one of those fields, but for many people, that's an incredibly valuable journey. Totally is a very valuable journey. It's the other kind of difficult journey that you make is from founder to Perplexity. That's a different thing when you run your own shop to when you join a team. Can you just talk to me, how did that happen? Does Aravind come and say, hey, like, we need a head of growth. You want to come? Like, just take me to that. You know, I go to business school. I go take a swing for 3 years and just grinding up against startup life. And there's nothing easy about it, right? Like when you're a founder that, you know, month after month, pivot after pivot, nothing is moving. There is nothing more demoralizing than those moments. And you know, when it came down to the final straw, we end up shutting down. I'm chatting with different companies. I'm chatting with Arvind, Dennis, Johnny, Dimitri, everyone. And it became very clear, like, this is a company that is moving crazy fast, is having so much fun. I'm going to go do that. But it's different when you're going from the founder's seat, right? You know, you are now well aware of how freaking hard startups are. Your ego is bruised, right? You just got your ass kicked. So it's a total adjustment in terms of framing. And then you're basically de-scoping yourself, right? I'm brought on to just drive growth. So, you know, founders enjoy the variety of I got to go work on 100 things and I got to steer the ship. But now you're hyper focused on, okay, I'm here to drive growth.
I am de-scoping myself just to go do an excellent job at this. And that's an adjustment as well. Okay, so you're here just to drive growth. Head of growth, it kind of means so many different things. It's a very ambiguous term. How do you specifically define head of growth? I see growth as an independent function that bridges product and marketing. Okay, so there's growth product and there's growth marketing. Growth product, let's start there, is a product team, engineering, design, data science, all working together. But your core product, the product you're obsessing over, is the user funnel. So acquisition, activation, retention, monetization. So growth is not just about, let me fill the top of the funnel with new users. It's about getting those users to become retained, to develop into power users so that you can eventually monetize them. So you just obsess over that journey that facilitates that user lifecycle. That's growth product. Okay, that's growth product. And then we've got growth marketing. Growth marketing, your goal is the exact same as the growth product team, right? Drive that user funnel from acquisition down to monetization, but your tools are just different, right? You're not approaching it from a engineering, design, or data science angle. Your tools are marketing channels. They're lifecycle communications. It's community. It's marketing campaigns. All these things need to live closely together, right? I can't work on an onboarding experience without a product team iterating on every flow and without the marketing team thinking about copy, thinking about email drip campaigns. Everything comes in as one cohesive unit to bring this funnel to life. Okay, I have so many questions for you that I'm writing in my little notebook here. I used to write on my hands, and then I got promoted to a notebook. There you go. Stories of an EA. So my question to you there is, these are quite built-out teams. Like, that is full resources and a lot of resource allocation. When is the right time to build out a growth-independent function? It's going to be very dependent on type of company, on stage, on founder makeup, and so on. The easy thing to say is post product market fit, but like, what does that even mean? But like, not really, dude, because like that team costs millions actually for growth product and growth marketing. And then what they're going to need on top of that, if you're at like 2-3 million in ARR and got product market fit, doth butter no fucking parsnips. You need 25 million in ARR for that team. Yeah. But I mean, I think as soon as you see that you have early signs in retention, like we're seeing, like, you know, if you see 30% retention in month 3 or 4, you have the kindling in your fire where it is now worth it to go put gasoline on it, go make that investment. And it doesn't have to be, we're going to go turn on marketing channels and spend a bunch of money. It could just be, okay, can we get that 30% retention to go to 40%? Can we make it really easy to convert all these users through the funnel? So when you were brought in, did you have this team built out, or did they say, hey, we want you to build it out yourself? It's a very flat organization. So there was nothing built out, but there were resources to pull from, right? You know, there are engineers that are ready to jump in on, okay, let's go hack onboarding, or let's go really iterate on deeper retention, or anything like that. But, and it depends on when you are starting, but a lot of times it's, well, what even exists today? And your first few weeks stepping into growth is you're just turning over stones. You're trying to build the map of the world. Okay, what's happening in acquisition? What's happening in engagement? What's happening in monetization? And usually when you ask those questions, you don't get any answers, and you just get 100 more questions that you have to now go figure out. So then your job becomes, let me build the right infrastructure so we can actually measure and understand the world. And that's where you start getting into engineering logging, attribution. Do we have first-party cookies? All of that. Is growth a game of micro-optimizations where you are moving from 30 to 35% retention on D90? Or is it big swings on a new product that could change the game? I think micro-optimizations are seriously underrated. I think anyone that has like built a growth model for their company, so you know, you imagine you open up an Excel sheet, okay? You have new users, you've retained users, you have resurrections, and you've churned users, right? New users plus retained users plus resurrections minus churned users, that's your weekly actives or monthly actives, right? And then if you assume like
a new user growth rate or a retention curve, you can now play around with, well, if I increase retention by 10%, what happens to my weekly actives? What happens to my monthly actives? That 10% small change in retention or in new user activation, you see the entire water level of your active user base just increase. Like that small micro optimization just raised the entire water level of the company. And so that's huge. Like I'm going to go after that if the opportunity is there. To hedge that though, micro optimizations have diminishing returns. At some point, I'm not going to be able to squeeze out an incremental 10, 15% without a lot of wasted experimentation time. And that's why, like, my rule of thumb is once a quarter, we have to be taking at least a couple massive swings, right? A big new feature, a big marketing campaign. It has to be high risk. It has to be high reward. I have to be able to stand in front of the company and say, I'm going to do something and be willing to fail there. And then you de-scope it down. What should your success rate be on those big swings? It depends on how much time you're willing to put into it. I'd say 25% would be pretty great on these big swings. So maybe like once a year, we have just a banger campaign or banger new feature that is now really driving growth or really opened up a new audience for us. That is huge. We said about optimizations, about kind of squeezing as much value out as we could. A cool way to do that is in A/B testing, determining what works, what doesn't, and then doubling down. What is the role of A/B tests today in your mind in growth? How do you think about that? You know, I'm coming from a data science background. I'm pretty biased here. There's a good, a bad, and an ugly. The good is we are using A/B tests to understand impact, to understand how every metric changes. Are we accidentally bringing down certain metrics? Do we really understand what is incremental and what is not incremental? That is like a well-scoped A/B test teaches you what you should work on next. It adjusts your direction. It adjusts your cadence. A bad A/B test is poorly scoped. You're not going to get any information out of it. It's a messy thing with a low minimum detectable effect. You're going to run it and you're not going to get anything out of it. You just wasted a week of your time. And then the ugly is I'm running an A/B test so that I can put something in my performance review about a number I moved, or I can like say something to my manager. And you see that as companies get bigger, right? We're running A/B tests just to like be able to say, oh, I increased activations by 12%. My question to you is that fair? And do you think actually good PMs need A/B tests because it is very clear when it's working and when it's not? Yeah, I think if your goal as a PM is to optimize direction, are we working on the right thing? Are we poking at the right part of this product that can drive impact? And A/B tests give you a quick response to it. I think that is like core to understanding, are we working on the right thing? Are we moving fast enough? Are we really moving the needle on this? That being said, you should go into an A/B test with a pretty strong confidence of what's going to happen. And this is where like intuition comes in of like, we're running this and here's what I think is going to happen. I think we're really going to move this metric, but we might see that other metric go down a bit. And that's what we need to watch out for. If you don't have that intuition, then you're just flying blind. Have you ever had an A/B test mislead you? A lot of times you see A/B tests with mixed results. So, and those are the trickiest ones to navigate. So let's say we're working on, okay, I want to get a user to hit their, fifth query in the session. Then I'm going to show them a sign-in opportunity. Well, I'm showing it a sign-in opportunity. I'm now juicing activations. Great. But a lot of people saw that sign-in gate and they hated it. They were like, screw this, I'm out of here. And now I'm hurting query volume. I'm hurting searches happening in Perplexity. So now I have two different metrics to hold on to. How do I value those two things down the road? That is where it gets really, really fun for some of us, where it's like, okay, well, how do we value this? Will that activated user retain? And over time, those retained metrics, if I think about this on a 30-day time frame or a 60-day time frame, will make up for that initial loss in query volume. I'm not going to go run that A/B test for 60 days and then come back and tell the team, okay, we finally made a decision. You kind of have to make a decision right there or figure out how to optimize and like protect that downside. You said there about getting to your fifth query. I always think to Facebook in this case, where they really wanted you to get to I think it was 5 friends, and then you had a much higher likelihood of retention.
do you have a metric internally that is designated as like a, hey, post this, we have a much higher likelihood of retention? Yeah, I call these milestone metrics. So can we go take anyone who's retaining at 30, 60 days and then look back into their first couple sessions and say, okay, what did they do differently? What is unique about their experience? And from that, can we establish a working metric? It's not perfect, right? Because it's not deep retention. But if I can get a user on Perplexity specifically to 3 queries in that first session, well, now I know I'm really onto something, because that is what a lot of great people do. It's enough time in product where that user now understands the value of Perplexity, and they're going to there's a high likelihood that they're going to come back and retain. You said there 2 to 3 in the first session. I had Alex Schultz, one of the OGs of growth, on the show from Meta, and he said that the biggest problem of growth is that every goal or metric goal can be gamed. And if you want that one, we can put in a load of recommended searches that you click, which technically get there, but doesn't actually mean you got what you wanted. How do you think about setting the right goal if every metric can be gained? One is monitoring. Does this still correlate down the road once we're done with gaming it, once we're done with tinkering with it? And if we're seeing it, that correlation start to break, well, okay, I'm not being honest with myself around if we're actually helping retention here. The other thing is to take a rounded approach. You can't just stare down one metric. I need to stare down number of queries, but also time in first session. Did that first session timing hit that 10-minute period? And not Why just... would you want that? Don't you want shorter time in because it means time to value is super high? Or you had so much great value early on that you're now rabbit holing into Perplexity. Harry, you mentioned a query you and your family were putting in last night. Yeah. What if that can lead to a bunch of follow-up questions? That's awesome. You're now deep in the Perplexity experience, learning and exploring, and that's great for us. I'm not sure I want to explore that query much more. For everyone listening, it was the query of how many times does a human fart in a day? And so your recommended searches were not that attractive, bluntly, to me at dinner, but I appreciate the sentiment entirely. Thank God that AI exists so we can answer that. Thank God. My question to you is, when we think about acquisition, what have been your single biggest lessons on effective acquisition since joining Perplexity? And what does Perplexity's acquisition makeup look like? AI companies have a ton of curiosity traffic right now, which is awesome. Anyone who launches something that shows a little bit of magic or has a magical demo, they are going to get traffic. They're going to get quick usage. All of our growth, most of our growth has been organic word of mouth. And that's and we're, 2 years in, and we're still riding this incredible wave of organic traffic. And that's amazing. That's the best channel you can ever have. So the question for us is, how do we keep nurturing that? How do we keep this organic magic still happening? What does the acquisition makeup look like now? Word of mouth is like 80%? Word of mouth, yeah, about 80%. It's going to depend on priority countries or international. We do a lot of big partnerships to drive distribution. So we have 20 Growth, which is a WhatsApp group with like the biggest growth leaders in the world. I'd love to have you in it after this. We'll chat about it. But I said hey, I've got you coming on the show. The most popular question was aggressive partner deal strategy. LinkedIn, Xfinity, Lenny's podcast all give away a year for free to paid members. What have been your biggest lessons from those partner programs? They are incredibly effective at driving distribution. We can go out and scream from the mountaintops about Perplexity, but it is a lot better when someone else is telling you to use it, or it is being bundled into an existing product of yours. That's going to drive a lot more trial. We have a phenomenal partnerships team. They are absolute sharks. Does that change the unit economics quite a lot, though? To a certain extent, but that's acquisition cost, right? We're willing to trade off a month of Pro, because if you don't use Pro, it's pretty variable, right? If you're not using Pro, we're not losing money on you. But if you are using it, well, now we're capturing you as a user. You're really starting to understand why Perplexity is magical. And then the game becomes, can we convert you to that paying user after? I get you totally. Okay, no, I get that. What partnership do you not have that you'd most like to have? Ooh. I mean, we have some pretty great partnerships. I think I'd think about more audiences. So what audiences do I want to reach, and what partnerships can we get to there? So
I think a lot about the student audience. And so there's some partnerships in that student world that I really want to break into to help drive distribution within students at scale. Can I ask, what have been your biggest mistakes in acquisition that you've learned from as a result? I mean, there's so many. If we're not making mistakes, we're not learning fast enough. I think I came in really interested in influencer marketing and in really wanting to test this channel. Creators, how do we work with creators to share Perplexity? And I totally underestimated the amount of effort it is to work individually with creators on specific content and making sure they get the right messaging. And Perplexity is not a simple concept to explain. Like me saying AI search engine means nothing. And so to manage a bunch of these creators creating content, long tail creators, it ended up A, falling flat, and B, taking up a ton of time. And so I think we're moving very quickly is we'd rather work with fewer creators and just develop a really good relationship with them. Can I ask you, when you came into Perplexity, I spoke to Aravind before the show, and he said that actually you very quickly diagnosed this is not an acquisition problem. This is a retention problem. Can you just take me to what you saw and set the landscape there? So look, you come in, you turn over all the stones, you're trying to get a sense of through this end-to-end funnel from acquisition down to monetization, like where should I spend my time? Where is there the biggest opportunity to drive growth? And, we had Dimitri and the business team running these big partnerships. We had tons of traffic coming in from the top of the funnel. My eyes went straight to that early activation rate, that week 1, week 2 retention. None of it was bad. It was actually like pretty healthy consumer retention. But that was where if we can move that number early on at the top of the funnel, we're increasing the water level of all activated users and weekly actives. That's where I need to hang out. That's where what's a good activation rate? Very, very dependent on the company. So keep in mind, Perplexity, you don't have to sign up to start using it. দাদা And that's amazing, right? It এই gives us the টর opportunity to ব্রাউজার have তো quick তোমার একটা trials. ছিল, তুমি People কখন can ইউজ just put in করেছিলে? a question and immediately see the value of এমনি it. ওটা But মানে that মানে ওটা কি ডান logged কুইজের out জন্য ইউজ visitor করে? to আমি logged in শুনেছিলাম। activation rate is tricky to navigate. And so like সিকিউর from বলে that তাই তো, logged মানে out এমনি যদি experience, ধরুন আমি টর ব্রাউজার ইউজ I'd করি, আমার love ডেটা ফেটা to লিক push হয়ে that যাবে into না? like the 30% of users are hitting my milestone metrics আর ঠিক করে বলো। and we're converting them to signed in users. On the retention side, bluntly, I ব্রেন think তো it's a তোমার bit কাছে আছে, murky. কিরকম I চলে? think a lot of people don't know. Can you provide ওই যে some কি clarity on ফায়ারফক্স, what good আচ্ছা ঠিক retention আছে। is? এখন কি So করছে ওটা কতদূর হলো ওই consumer's পোর্টফোলিওটা? hard, man. Consumer's really hard. And so what you want to see is that তুমি retention ঠিকই curve বলেছিলে এতদিন stabilize. হয়নি I think it's ইভেন্ট। like by month 6 you want 45% is really, really, really good. That's দাদা that's এই the target, right? That's where we want to push to. 31 Especially when জানুয়ারি you're থেকে আছে, not বুঝতে a পারলে? social ইট product ইন্ডিয়া, that has ইন্ডিয়া more না, of like that ইটের একটা smile ভার্চুয়াল retention হ্যাকাথন, curve. আমাদের চলো You একটা really কি need to আছে? figure out how can আরে we চলো drive ম্যান, retained value অনলাইনে and হচ্ছে increase তো। frequency to get to that 45+%. So 45 দেবে? plus percent on কেন কারণটা? D7, D Oh no, month 6. বলো। month 6 you want 45%? ঠিক আছে। Yeah. আমিও দিই তাহলে একা একা। Are you blown away তো by the দেরি drop আছে off এখন amount? 1 মাস। No, I এত think সবকিছুতে that's না pretty বললে good. I হয়? mean, that's high. Oh yeah. অনলাইন But হ্যাকাথন then, I কত mean, that's ভালো how you know you're providing দিচ্ছে না। value. I think Duolingo's 365, they're 50%. And that's Yeah, like, and that's 12-month retention at 50% 's world class. And the engine they have built is incredible. It's a world class way of retaining users. so we identify that retention's the problem then. We've got amazing acquisition, we've got these partnerships teams that's driving top of funnel. What do we do then when we know retention's the problem? There are finite ways to move retention. One, you are setting up your milestone metrics. Okay, what correlates with deeper retention earlier in the funnel, right? So that 3 queries in your first session, and now how am I really trying to move that? But at a higher level, constantly playing with mix shift, right? So one, you can optimize channel distribution. So organic and referrals is always going to have higher retention than paid acquisition and partnerships. Okay. That's, because of so much of our growth is word of mouth and partnerships led, like we don't have much channel distribution optimization to make. 2 is you can target different audiences. Perplexity is incredibly horizontal. My grandmother uses it. My doctor uses it. Everyone uses it.
So can I find different segments, different audience segments that have really high retention? And then can I specifically go after them? So I'm changing the mix shift of new cohorts to that new audience, which increases that retention for those cohorts. Which cohort has the highest retention and which has the lowest? Well, you see a lot of trial users that like are coming in from like curiosity traffic, like the weekenders that are putting in, you know, how many times does someone fart in a day? That's a little bit lower retention. If I'm here to solve a knowledge gap, like I'm using Perplexity for work specifically, or I'm a student using Perplexity to find sources for a paper, that is really, really sticky retention because we are solving knowledge gaps for you. It's not just curiosity that we're bringing you. Okay. And so we have that. I saw Aravind on TV the other day. I can't remember what channel it was. You have so many CNN, CNBC, MSN, fucking all these letters, ridiculous. But on one of these channels, and he was like, actually, the amazing thing about Perplexity is the length of query is much longer than on Google. It's like 9 words, I think was the average. Yeah. What does that tell you, and does that influence how you think about targeting, acquisition, retention? Totally. Yeah, because you're getting more information from the user around what they're looking for, which means we can provide better responses. We can reformulate that query to give you broader search results and then use that to drive our answer. The more information we have in that query, the better of a result we can provide. What has been the single biggest needle mover? Aaron said that you drove the numbers up by 10 to 15%. What has been the single biggest needle mover in doing that? I think that there have been a couple. We've worked on a lot of different things. One is, can you mix shift audience? So we've done a lot of audience targeting around specific high quality cohorts. 2 is, can you mix shift platform? I don't want you just on the web app, or I don't want you just on the mobile app. Can I get you across multiple devices? And that cross device conversion is really, really strong for retention because now you're using it on weekends. You're using it during the day. We're everywhere. We're integrating into your life. Those are the 2 really big ones. And then you never can just underestimate driving product improvements is always going to drive retention. What retention strategy did you think would have a big difference and didn't? I mean, and this is something we're going to never stop banging our head against, but how we tinker with the messaging as soon as you land on Perplexity, it's critical for us that people understand that Perplexity has up-to-date data, that we show sources, and that is the inherent value of it. And so you're going to see a lot of experimentation on how can we drive the messaging so people understand what they landed on and can figure out how it can drive value for them. So I quite like doing this game, Yeah. which is I did this with Glenn Coates, a VP of product at Shopify, and I basically went on Shopify's website when we were doing the show, and then I tore it apart, literally very embarrassingly, how rude of me. And he was like, "Oh, this is awkward. It's live in a show," and then he tweeted like a year later, following Harry's ridicule, he was right, and so I've changed the whole Shopify page, and I was like, yes. Yeah. But Perplexity is a free AI-powered answer engine that provides oh dear, it's fucking hell. Yeah, Did you you're swallow a done. thesaurus? That provides accurate, trusted, and real-time answers to any question. What would you score that out of 10? I give us a 6 right now because It's a bit wordy, isn't it? it's a bit wordy. Is that our Google description though? Mm. Well, I mean, there's some SEO optimization happening there as well. But when I go on to perplexity.com or .ai, it just comes up with like, ask anything, discover anything. Where knowledge begins. Yeah. And that's the fine balance, right? How much information do we need to slap in your face? How functional should it be? How brand oriented should it be? This is where we spend all of our time tinkering in terms of what does someone need to hear to understand how Perplexity can help them? And what are the key differentiation points for us that we need to highlight? So you can have it be anything. It's yours to own. Just you are the one who decides. What would you have? On the homepage? Yeah. I mean, I think where we're moving to is really simple language around ask anything or what do you want to know and search like never before. I think it's really important to get across that Perplexity has live search. We are searching
very specific marketing. What have you learned from them? It's hard, and TikTok's a crazy beast of a place. My God. Why do you but- say but- TikTok's a crazy beast of a place? I agree with you. I can share thoughts around that, but why do you say that? You know, the algorithm is so different than how we think about traditional algorithms, where it's built for virality. So if you're trying to do organic TikToks, you're comfortable with, 10 failing, but one hitting 7 million views. And like, that's almost like, it's such a crazy power law. On the TikTok ad side, like, I think we are learning a lot around how AI companies need to be positioning themselves with new audiences that don't care about AI. Like, you can't walk up and be like, well, we're an AI search engine. And people are going to be like, oh my God, that's what I've been waiting for my entire life. Like, you need to abstract away this whole AI piece and just get straight to the value prop of get answers immediately backed by sources. Yeah, 100%. I think we've got to the stage now in product marketing where like AI has become almost a negative. Like my Yeah. toothbrush is now AI powered, and so it really is. It says on the box AI powered. I have no idea how. But yeah, thanks Oral-B. But my point there is just like bluntly, I think it loses value from having the AI sticker on it at some points. Yeah, and it worked really well early on, right? It was kind of like a magician pulling a rabbit out of the hat of like, look at this magic. But Do you now find it's, conversion shit on TikTok? conversion is pretty good. We're still very early in testing this. Conversion is solid. Like, top of funnel campaigns do well. I'm still waiting for some of this retention to bake. How To much see are how you this will willing actually to spend on tests today? Not much at all. You don't need to spend much to really understand what Is that that retention is like going to look like. 10K, 20K, 50K? 10K a week, and the amount we can learn is pretty great in terms of what messaging is working, what messaging is not working, or what use cases really, really resonate with people, whether it's travel planning, studying, solving something at work. There are a lot of different things we can test because we're so horizontal. Do you like brand marketing? As I really subscribe to the concept that you need someone to hear about your product 3 to 7 times before they're going to give it an honest trial. Like, I really do believe in that. And I think it's incredibly hard to measure the value of it. And just because we can't measure it does not mean that it's useless. What brand marketing thing do you not do today that you'd love to do? Sponsor a stadium, be on a shirt for a football team, be on an F1 car. I get a lot of these emails all the time. I mean, we're doing a lot. What's cool about Perplexity is we don't have a marketing department. So we're doing so many cool things, and all of these are just someone on the team was really passionate about an idea that we believe has viral potential. And so if so, like, go execute and make it happen. And the metric that matters in brand marketing for me is there's an expected number of impressions that anyone will tell you you're going to see if you go run a TV campaign or sponsor a jersey. And what really matters is what is the incremental impressions you're getting from that? Can that moment go viral where, okay, we may be paid for X amount of impressions, but we're getting a lot more on top of it because people are the buy reposting me a about coffee it, because it has gone viral payment across gift social. করলে That is where brand marketing can be really interesting. তাহলে ওটা দিয়ে I তো সেটা totally কি agree হবে with you. তাহলে? One of my friends and a portfolio founder of ours started like a recruitment platform years ago, Result taking এ? people out of like big banks like Goldman Sachs and putting them into startups. And they Okay. basically took out a আমি তো billboard রেজাল্ট right করেছিলাম, outside of আমি হেল্প Goldman করে দিতে Sachs' পারবো। headquarters in London and said, Yeah, yeah. Goldman, really? I Get bet started your করেছিলাম। parents would be রেজাল্ট proud. পেতে এমনি Dot, dot, অ্যাকাউন্ট বানানো dot. আছে তোমার? And every That's awesome. newspaper in London wrote Yes, about নাকি this developer, startup that মানে was basically মানে sticking the middle একদম finger আসল to the big অ্যাকাউন্ট banks. And the incremental, to your point there, was enormous. And especially when you're hitting net new audiences. So we ran a TV ad with Jim Harbaugh, like great football coach, American football in the US. And, the commercial goes live and we have tons of influencers, reporters in sports retweeting it, commenting on it. And this is a new audience, right? For all the sports fans sitting at a bar watching the game who have all their niche questions about what's happening in the game, like who won this game 12 years ago, Perplexity is perfect for that. And we are now introducing them to this net new audience that we're not really reaching right now. And that's amazing. That's very effective. What's been the hardest thing about doing paid for you at Perplexity?
there's so many different channels to test, and I don't want to lose my focus spending on channels where I'm not going to learn much. And I think I got burned. Like a good example of another area I got burned was newsletter sponsorships. It's like, okay, like there's some interesting audiences here. I want to try this out. But I think it's really hard unless you have a really crisp product that you can put into a really simple ad placement that is like 2 sentences of text and that's it, right? Newsletter placements are really hard. And so, like, again, that's another one where we came up flat, and I don't know how many learnings I walked away with there. So I kind of just spun my wheels for no reason. So you're happy to spend if you get learnings. Oh, Like, even if absolutely. it doesn't work, you're fine with that. But the Yeah, ones where you just growth get is a game of intuition, right? All we have to do is just keep learning to figure out the right direction and then just work on cadence to just keep driving in that specific direction as we learn. Dude, when we spoke before, you said to me, be first to a growth channel or just be better. Which I liked a lot as a hedging strategy, to be honest, because it's not like, Yeah. first always wins. But can you just unpack that for me? I just want to understand that. Yeah, I mean, there's no middle ground. So everyone in growth is looking for alpha, right? Find the untapped channel, beat everyone to it, right? Dropbox like with the referral program, Groupon and email, Pinterest and SEO, Duolingo, and just like a totally unhinged social media, right? All of them were kind of first to this concept, and it really, really worked. And so as a growth person, you're constantly looking for like, where is this opportunity? What are the channels right now that are kind of greenfield? Now, the problem right now is like channels are a little bit quiet right now. Facebook and Instagram are really expensive. Apple updates have made paid hard. Organic social is really, really hard. Notifications are so crowded. Everything feels really crowded right now. There's no middle ground if you're not first. It literally just means your only other option is to just be a lot better than everyone else. And that's like where we need to hold ourselves to. What channel do you think the world doesn't appreciate that should be appreciated more? This is a controversial one. I think community and how you can unlock your power users to share the value of your product to their own miniature communities is incredibly powerful. Incredibly powerful. How do you do that? So let's take students. There are students using Perplexity and getting tons and tons of value, but we under-index in awareness with students relative to ChatGPT. So then the question is, well, how do we take our best students and give them everything they need, marketing budget, swag, whatever they want, so that they can go be on the ground on these campuses and drive growth for Perplexity and build density on that campus. Let's arm our troops, our power users, with everything they need to grow for us. And it's an incredible strategy because they're on the campus, and these are not big campuses. You can build density very, very quickly. And as soon as you have that initial density, then you see word of mouth start to come alive. Who do you consider your biggest competitor? I mean, the obvious ones, Google and ChatGPT. Yeah. Which one? I think search is a massive market to go after. And so if there's somewhere we want to live, it's going up against the big guy. Where could you be better? What channel are you on now where you're like, but we could be better? I mean, luckily for us, we aren't on many channels. We are still so organic, growth driven, partnerships driven. I do want to really, really try and figure out how we can unlock creators and tastemakers in a more efficient way. And that again is building relationships with fewer of them and working with them, not where we're just, throwing a sponsorship placement on their newsletter or in their podcast, but like finding really creative ways to bring it to life. I totally agree with you there. I always say like a piece of content has to do one of two things. It has to educate or it has to entertain. And if it doesn't do that, then it doesn't have any place in any of our things. So many people social posting. It's like thrilled to announce Perplexity's new product. No one cares. And you don't learn anything from that. Like I would rather try and entertain and come up short because okay, like that one didn't work. But if we're just trying to like go in the middle and say, here's Perplexity, like that's never going to work. Before we discuss this team, I have to ask, what growth tactic have you done that you wish you hadn't done? I mean, I think I'm still kicking myself for those newsletter sponsorships. মানে কোন কম্পোনেন্টটা অপটিমাইজেশন দরকার ওটা আমাকে একদম বলেই দেবে ব্রাউজারে, তাই তো? তো এটা
এটা যদি আমি ইউজ করে যদি আমি ডিপ্লয় প্রোডাকশনেও কি দেখাবে এরকম, মানে প্রোডাকশনেও কি এরকম? ওটাই কি, এটা কি বলছো? টেস্টিং হচ্ছে, হ্যাঁ এই তো এখানে দেখাচ্ছে এনেবল টু স্ক্যান What রিয়াক্ট, did you পুরো একদম not do বলে দেবে that যে you wish you এইটা, had done? This is an in just product drop model. it, highlight So exactly the component you need to optimize. I don't think sharing is inherent to the perplexity user journey or Used by user flow. perplexity, Like, I don't think that আচ্ছা we trust, have an হ্যাঁ inherent viral loop where someone does some research and then কোথা থেকে shares a তুললে এটা? thread or screenshot to another person. But there's a কোন lot গ্রুপ of sharing থেকে? happening on Perplexity right now, right? Take an answer and put it on Twitter or send it to Harry. Whatever it is, নাম we বলো। see a lot of traffic come in through sharing. The more I really want to get my hands on that experience and just চ্যাটে লিখে দাও, drive user sharing and নিয়ে find যাবো। creative ways to promote sharing of this knowledge that you are curating as a user. Listen, dude, I want to discuss like building the team before we do a quick fire. It's really Yep. hard like hiring for growth. What is the right first hire in a growth team? It depends what you need. Do you want a marketer that can juice the top of the funnel but can still get in the weeds, run experiments, think about onboarding flows? Or do you want a product person that can run marketing campaigns? I obviously fall into more of the latter, right? I want to like spend time in the data. I want to be turning over stones. I want to be holding on to that data. It depends on the makeup of the current team and the founders. If you're feeling good from a top of funnel perspective and you have a complex funnel that is cross device, go for the product person that has built these funnels before. Do founders make good hires? You obviously were a founder before. Rippling, another obviously very successful company, has a huge amount of founder hires. Do founders make good hires? And what are your lessons from that? We have a lot of founders here. And I think the best part about hiring founders is that they are much more comfortable at taking very big swings and being willing to fail. Like, it is by nature, if you're going down the founder path, you have to be a little bit more comfortable in that world than the average. And the average person is not willing to fail. They're not willing to go stand up in front of the company and be like, we're going to try this out, and it might not work. And so the more people you can get like that, you know, Mike Maples at Floodgate has this incredible analogy that early startup teams need to be like a jazz band, right? Like, throw out the sheet music. This is not what it's about. It's like, no, you are here to just riff off of each other and make it work. And that's where founders, I think, are great. It can go sour, I guess, as things scale and you start to need that sheet music. You start to need a lot more coordination as the company grows. And some founders just don't want to, they miss the jazz band and they're going to jump quick to the next jazz band. Do you have to manage them in a different way? Maybe they're a little bit more larger egos. They like to feel like they're in control. Is there any different elements in how you manage them? Yeah, I mean, I think you have to let them cook. I mean, you want to give them enough band. If you hired them and you trust them and they can execute, get out of their way. Let them go experiment, right? I mean, you don't want to put guardrails over their ability to experiment and try different things. Guardrails is going to hurt everyone. It's going to make everyone think a little bit smaller. You remove those guardrails, everyone's thinking big. One person at the company goes, takes a big swings, runs a TV ad with Jim Harbaugh. Everyone's now thinking at that level of, okay, how do we go bigger? And that's the kind of culture you want to create. As a European, I know guardrails very well. We specialize in them. Cookies, allow. Okay. What do you mean when you say about hiring for taste? What are you looking for? What are you not looking for? Taste is the ability to understand what good looks like. I'm convinced that I'm not actually that good at anything, but what I can do is go look at what's happening in the world, understand what good looks like, and then try and reverse engineer it. So that's all. That's the game. If I want to, How do I know if someone knows what good is? Do I put different product in front of them and ask them to analyze it? How do I know? I mean, I think it comes down to like, what are the questions they are asking that shows the depth at which দাদা they are একটা thinking. জিনিস দেখবা, Right. I mean, I'm a pretty open book when আমার মাইন্ড I'm ফাক হয়ে interviewing গেছে। about what our challenges are, What and we the kind of just jam on them. hell? And you can tell very quickly. আমাকে লিঙ্কডইন একজন কি লিখেছে দেখো মেসেজ করে, এ, আমাকে কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে, ওখান থেকে মেসেজ করেছে, দেখো এবার আমি ফেক না কি জানি না, অ্যাকসেপ্ট করি আগে, দেখো আমারও মনে আছে বাট কি লিখেছে দেখো।
হাই শুভ্রনীল, আর এটা আবার অ্যাকাউন্ট জানি না। হাই শুভ্রনীল, আর ইউ লুকিং ফর এ জব ইন জার্মানি? হোয়াট? এটা ফেক অ্যাকাউন্ট দেখে বলছে আই হ্যাভ অ্যাক্সেস টু 500 জবস ইন জার্মানি। এইটা পড়েই বুঝে গেছি ফেক। দিস ইজ দ্য ফেক। আমাকে কি বলবো ওটা কি? আমার মনে হচ্ছে ফেক এটা। এটা তো ধরে নাও ঠিক আছে। ফেক মানে 17,000 ফলোয়ার, বাপ! হুম, ওই বুঝতে পারছো? পোস্ট আই গেস ও মানে এটা হচ্ছে মিডলম্যান টাইপের হয় না, যে এই কোম্পানির সাথে এই জড়িয়ে থাকে ওরকম। ব্রেকিং নিউজ অনলাইন, আচ্ছা রিপোস্টেড আচ্ছা। ড্যাম, আসল। तो কি বলবো আমি? हम तो जर्मनी नहीं जाएगा मतलब। হ্যাঁ, আর লিখবো, লিখবোটা কি আমি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে ওর, তোমাকে ওটাই বলছি, সেন্ড মি ইউর সিভি এন্ড আই উইল সার্চ ফর ইউ ম্যাচেস। বাবা, কিছু বলছি না, ছাড়ো, এখন আমি কিছু লিখলে রিপ্লাই দেবো না। এটা আমার মনে হচ্ছে কি বলতো, মানে অ্যাকাউন্ট আসল, অ্যাকাউন্ট নকল না, বাট ওই হয় না, সে একটু পয়সা নেবে, পয়সা নিয়ে বলবে যে এই যে খুঁজে দিচ্ছি, ওই ওরকম টাইপের। ঠিক আছে, অ্যাচিভমেন্ট আনলক। ডিড ইউ সি দ্যাট? দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টু মডেলস, হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ দ্য গ্রাস গ্রিন? আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ দ্য গ্রাস মানে কি বলতে চাইছে? লিঙ্ক না আসলে How মাথা খারাপ deep হয়ে যায়। someone is thinking about your হুম, challenges and their experience with it, that okay, they're asking the right questions, they're trying to reverse engineer how to make this দোস্ত, good very, very efficiently. What questions do you always ask in an interview? I always have হ্যালো। some similar ones. I loved trade war stories, especially for people with a little bit more experience of, okay, you were at, Lyft. Tell me about the war stories around when times are really hard. What didn't work? Tell me about your biggest, just total flop. And let's go laugh about this flop together. কল আস, ফেক কল মানে কিরকম? আহ, হ্যাঁ দিচ্ছি। স্ক্যাম কল, আসি আপনি। I always ask about like what was your first entrepreneurial endeavor? Great entrepreneurs always Yeah. start young. High Yeah. correlation between the amount of activity you have in early entrepreneurship and how successful you'll be later on. Yeah, because it's almost a personality trait, and you're trying to evaluate that personality trait because that's something they probably had early on. Do you do take-home assignments for candidates in growth? I do, for every role. It's a big ask, so I am cognizant of trying to keep it well scoped. What is an example of a take-home assignment and how do you run it? We give different scenarios, usually 2 or 3 different scenarios, and they're all fairly open-ended, so you can go into as much depth but the goal is to walk us through your thinking of how you would approach it and all the different areas that you need to consider along the way. It is really Do you hard do it for Perplexity or it's a different company? for Perplexity.
So like you'll give them an actual talk, because some people say it's unfair because you have asymmetric knowledge and they don't know it and you know it, so it's going to be hard. I think that's fine. Like that's a fair argument. In the end, like we give them a hypothetical about Perplexity. Like we're considering launching X. Now walk us through your thinking of how you would approach this launch or something like that. So it's not, something that we have done. We're all in the room brainstorming together. And you can kind of get a sense and feel of like, what is it like to jam with this person and brainstorm with them when it's that hypothetical, but still related to Perplexity? How quickly are they going to ramp up and fit in? How quickly do you know when you've made a mistake on a hire? I think fairly quickly. My rule of thumb is if they truly need an onboarding doc, we're in trouble. Like Why? because if they need me to say, here are the 20 things that you're going to do over the next 30 days, and like, this is your checklist. I want someone who can come in, turn over stones, and build their own onboarding doc very quickly. Like I'm very high trust in the amount of rope I want to give someone to go in here and start working on the area of ownership that you have and go make it really, really great. I'm going to have perspectives on how we should be implementing it or what we should be working on, but I want to see them come in and very quickly be able to figure out and have the motivation or the drive to say, this is what we need to work on and here's why. I do get you. I always find the best employees start before their day one. Do you know what I Oh, mean? yeah. They come in and they're like, I've done all these things. You're like, whoa, Yeah. okay, great. Yeah. We like, I got my laptop on Friday and was going to start on Monday. Like I was in every single dashboard we have. And part of it was just pure excitement, but like you wanted someone that is just like obsessing about the problem at day one. Final one for you. What are your biggest hiring mistakes and how did that change how you approach hiring? This is something I'm still working on. I'm slow to hire. And I'm Ooh. trying to get faster at it. Why are you slow to hire? I care a lot about team. People say that, they quit the manager, not the company. Like, I think people quit the team. And if you have an incredible team that is just like well-oiled machine and mutual respect and everyone loves working with each other, it's really hard to quit that. You're just having too much fun. And that's what I want to try and create. I want everyone at the company to be like, man, I wish I could like work on the growth team for a couple of months. Like that's the thing that's the goal to have. To find someone that can fit into that I believe is going to jump right into this and play an amazing part and have the mutual respect of everyone and be a great teammate. It's hard to find and you can overthink it sometimes. So I'm trying to be a little bit quicker to the punch on evaluating and taking risks with hires. The only thing I will say to you is the biggest mistake that most people say on the show is they've hired too fast and they wish that they could let fires burn, so to speak. And so I'm not sure. I think sometimes it's better to wait for the perfect person. Yeah, it's trade-offs. Yeah, It's that's total hard. trade-offs. Dude, I've loved doing this. I want to do a quick fire. So I'm going to say a short statement. You're going to give me your immediate thoughts. Does that sound okay? Sounds great. First, most common, expensive, irreversible mistake you see founders make when it comes to growth? Assuming the user's pain points when they're just straight up faults. Like, what does someone actually need to learn in that first session? It's the most common. You end up running up the wrong wall. What's the most polluted growth channel today? I mean, I think especially with all the latest Apple changes, I don't know how anyone is going to make Instagram or Facebook ads efficiently work at scale as like a core growth channel. You've got a friend and they've just been given a head of growth role and they start tomorrow. What advice do you have for them pre their starting this new role? Obsess about every single number in the dashboard. Get your hands on as much data as possible. When I started at Lyft, I was literally like entry level, nobody role. But like my one thing was like, I'm just going to know the numbers better than everyone else. And like you start to learn how the machine works when you see how all these numbers start to correlate with each other. And then when you start knowing the numbers better than everyone else, you get pulled into all these incredible meetings because you're just the numbers guy. Like we have to have him in the meeting because he knows these numbers better than anyone. And I think that is the ultimate way to just build intuition of how your growth machine works, where are the friction points in it. And that is what's going to help you make the better decisions in terms of what you should be working on. What is the single biggest lesson that you took from Lyft that was successful first? Don't need to run paid ads. Focus on retention.
focus on iterating on product. What did Lyft do terribly that you vowed never to do? We overestimated how much better we could make the ride sharing product. I think we started to hit dimension. Like when you look at ride sharing 4 or 5 years ago versus today, how much has the product changed? Not that much. So if you don't believe, if you believe that you can keep making the product better and better and better, and that's going to unlock new markets, well, that's one thing. But if you're wrong about that, well, then you should be pivoting to, meal delivery and stuff like that, because you've hit your diminishing returns. And I think we underestimated how quickly we hit the ride sharing diminishing returns on the product side. So the takeaway there is understand where the moment of diminishing returns is. Exactly. Yeah. And it's tough in AI right now because the world is changing every second. But it's critical to be honest with yourself of what is the true TAM of this? Are we still seeing unbelievable growth in product iteration? What would you most like to change about the world of growth today? I think just clarity of, you put 10 growth people in a room and everyone has a slightly different answer of what we're working on. But it's growth product and growth marketing. And I think the more people that understand that, the better. What have you changed your mind on in the last 12 months? When I joined Perplexity and was writing out my pro-con list, I think the one that was up there was can the application layer capture and monetize value? Or is it all just, one big pass-through cost? And now, fast forward not that long, I love being at the application layer. This is awesome. And so I think that's really changed my mind. I think the application layer is an amazing place to be. I think that's where so much of the value is going to emerge. It's so fun. It's so funny how the whole ecosystem recenters and reshifts their mindset around where value accrues. I remember doing this show where literally everyone was just saying, how does any value accrue on top of these models? It's just wrappers. And that was it's so agreed. And I mean, it's crazy that, 8-9 months ago, that was a big question. It wasn't clear where there would be value. And today we're getting a little more insight into people who crush at the application layer, who go really, really specific on high TAM areas, can make a lot of money. What's Aravin's biggest strength? He can go from a very high level company strategy of what direction do we need to go, very quickly, 2 seconds later, down into incredibly specific weeds of what a user funnel should be. He can jump at these layers like no one I've ever seen. And this is all in one meeting. What's his biggest weakness? I think Perplexity is his first big swing at a company. And so there's a lot of intuition that he's picking up on the fly. And it's awesome to see how quickly he is to pick up on whether it's growth intuition, whether it's partnerships, whatever it is. But he's learning on the fly because he is a first-time founder. Totally. 100%. Well done there. That's a really hard question to ask, by the way, dude. So, really, just nailed that one. Final one. What's the best growth strategy outside of Perplexity that you've been wow, that is really amazing in the last 12 months? I'm a huge fan of products or features that are built that can drive viral sharing with users. I think Spotify Wrapped, right? It was the first one to just oh my God, this is going, everyone's sharing this. And I think that strategy is now adopted by so many AI startups, whether it's image generation, whatever it is, but create something that is very, very shareable or very unique and people want to put out into the world. And now everyone knows who you are. It is the fastest way to growth by letting your users do it for you. Why don't Perplexity do a Perplexity Wrapped? How many searches, favorite topics you searched on, biggest person you shared to? Be quite cool. Who says we're not doing that? Oh, spoiler! Spoiler! Boom! Mic drop to finish the show. And I'm here for a job anytime, dude. Just anytime. Ventures, tough business. Dude, thank you so much. This has been so much fun. I've loved having you on, and you've been a fantastic guest. Thank you so much for having me. This is great.
if you want your business to thrive on a global scale, you have to become a local community business. In Great Britain, you want to be a UK company. You want to be part of the fabric. You don't want to be some company parachuting in just making money. That's not the kind of a trend anymore. You are profitable. You are growing insanely fast. Customers love the products. Why IPO? We wanted to embrace public diligence. We're operating in more than 150 countries. Once you're a public company, transparency is no longer an option. It is a responsibility. It is a requirement. Ready to go? Donald, I am so excited for this. I've been looking forward to this one for a long time, so thank you so much for joining me. Well, thank you for having me. Now, I would love to start. I heard that you worked in a series of restaurants to finance your education in the early days. Can you just talk to me about that? Where was it? How old were you? What did you learn from those early days? I was 17. I was love struck. I came to United States to chase a girl, and I had no place to live. Well, that's the gist of it. So went to a restaurant to beg for a job, and I succeeded. And I washed the dishes, and I bussed tables, and I waited on the tables. Because my English was terrible. I persisted, and I continued to climb the ladder. To become an assistant manager. So that was my career. It was a pretty good one. It was in Santa Ana, and I got shot at. But that trained me to be tough and resilient. But that was one of the early experiences that I had. I mean, I was not expecting that. That was not in the research. Can I ask you, when you look back to that time now, I think a lot of the time we look at incredibly successful people and we say they were kind of always destined for that. When you were working in a restaurant, a busboy, climbing that ladder, did you always know that you'd be successful? And the definition of success is situation dependent or personal. It's very personal. For me, I just wanted to be with a girl I love. That was success. If I can survive and continue on that path, that's great. I never really thought about making money or anything else. How has the definition of success changed for you? Oh, it's the same. Every day you live your life happily. That's a success. I don't need a lot. And so then, how does the first job in finance come to be? Because you have this incredible career at Bear Stearns. 15 years, you were chairman and president of Bear Stearns International. How did the job at Bear happen, and how do you get into finance? My wife had a good job. I had a restaurant job. And then after I graduated as a chemical engineer, I couldn't find a job. So therefore, I didn't find a job because I quit my restaurant job. And I interviewed for a job 58 times. I was turning down every single time. And I knew the reason why now, but at that time it was devastating. What was the reason? If you actually thought you're better than the person who's interviewing you, it shows. That's a challenging starting point. Right. When you have a chip on your shoulder, that's not a good thing. Do you not think a chip on your shoulder is a good thing? In our business in venture, we say, chips on shoulders, put chips in pockets. And a lot of VCs say they want the founder with the chip on the shoulder, the vengeance to build something. Depending on what job you want. As a venture capitalist, yes. Or as an entrepreneur, perhaps. But if you are applying for an engineer's job, you want a job for at the time. I was lucky enough to have a mentor who taught me everything, and who I can actually go back to saying, how should I look at this? What should I do? And I was mentored. Not only one, but a couple of them told me what to do and share the life experiences and the collaboration, the try and error. And if I made mistake, and I was forgiven and continued to be on that journey to do better. So taught me how to
make constant improvement every single time. When you look back, your last minute, last day, last hour. So these are lifelong lessons, and I was taught about how you are going to figure out some ways to know that every day is a good day. And when you are looking at your daily life, you complain about how boring and mundane it is. But that's how life is. Not every day is a home run day. Not every day is exciting. Most of the days are kind of boring. But if we believe in competitive world, every day, everybody's day is similar. Like my mentor was a champion is a world champion in bridge. And this is, he's the smartest guy in the world in my dictionary, right? So all of the bridge hands are played by all the competitive teams, except that sequentially probably is different. You play this deck first and the other guy follow that. But all the hands are played fairly and squarely. That's just like life. You might be born as somebody who's great in the very beginning, from a family with resources, and then you're going to go through your challenges. Don't worry, those challenges will come for you. If you had early challenges, and your home run days, your great days will come after. So, all these things, they're just sequentially different. But as long as you treat every day as your last day, every day as the day that you wanted to do better, and you'll win. How do you think about the balance between skill versus luck? Hard to answer that question, because in a different stage of life, it's different. The answers ought to be different. In a way, luck is always the most important thing. I'm a fatalist. And I believe in fate, I believe in luck. But if you wanted to do better than your own luck and your own fate, you have to work hard. You have to appear to be full of confidence, and actually do have full of confidence, but not to go too far to get into arrogant mode of yourself. So all these things are dynamic. There's no one answer to that. How did Shein come to be? That, it's, when we look at the last few years for you, it's been incredible, but it's also a different role. I mean, we had a couple of years also in media world. It's a different role. How did that come to be? In almost everything I have done in the capitalistic world in America, there's a clear distinction between doing good and doing well. And I kind of believe that you have to do well enough, and then you started to do good. Do not mix the two too early and too mixed up. And if you look at the Shein's business model, yes, we try to do well. But the definition of doing well, you must do good first. Let me explain to you what I mean by that. In our business, everybody says that the customers are the most important thing. But what do you really do with that philosophy? It's very different. Retail business is such a business that is connected with the customers the most, but yet very few of us actually listen to what customers want. And we have observed that there is a significant wholesale change of a customer philosophy or customer psychology. The kids, not a kid, well, you're not a kid, but the people in your generation or younger, they really have a lot more self-confidence. They really wanted to wear their expression on their sleeves. Whatever the form it is, whatever belief it is, they are not afraid of expressing it. And they're very good at that. So the fashion business today is becoming very diversified. The fashion statement itself is becoming very diversified. It's no longer just listen to a few designers say, okay, this is what you should wear. They wanted to have their own say in it. Can I ask, is that different from historical fashion? When you look at, the roots of Chanel or the roots of Hermes, and people would buy them because it was an expression of themselves. It was maybe what they felt they were or what they wanted to be. Sure.
Is it not actually the same? I think it is the same, but I think it's more individualized. Hmm. In my generation, I listened to my parents a lot more. I think my mother wishes I did. I think it's a little different today. And then in the future generation, it will be more different. As a result of it, you have to have more styles in display in the world. And if you manage to listen, that's part of doing good. Because you listen, you adjust, you respond instead of you dictate. And then once you actually listen and make the things they want you to make, then you have less unsold inventory as a result of it. And then you have a lot better efficiency of taking out all the middle layers and unnecessary waste and all that. And then you all of a sudden have a lot more savings, cost savings. As a result of it, you can translate that to lower prices to your consumers. Now, you listen to the consumers, you give back to the consumers, you contribute to less waste to the planet, you also contribute to less pricing for that particular customer. So therefore, we do a lot more business in the rural areas, villages in UK than London, for example, and Paris and the like in America. So the people who are living in the countryside do not have the time to travel to the city because they don't have the stores in certain areas. And it takes money to come to the city, it takes time. And also they have less resources to dress themselves up prettier and trendier. So these are all the things about doing good. As a result of doing good, we can continue to grow and be profitable. That's doing well. So if you really look at all these things, how you sequentially executing all these things, all of a sudden you find yourself doing good first and doing well later. So that was a difference in Xueyuan. Can we start at the beginning of that funnel, which is actually identifying user trends, identifying what they love, listening to customers? One of the biggest kind of pillars of the success that you've had is kind of this element of real-time retail, spotting trends that consumers love, and then being able to move fast on it. How does real-time retail work specifically for you? How do you spot trends so efficiently, and what does that look like? As you search, as you discover and reflect yourself, that you leave a trail of color mutations and style preferences. And most of the styles are no more, no less than all the mutations of such in different times. If you can reimagine the supply chain not as a mass industrialized production factories, if you imagine the factories are all networked, small and medium sized, and if you can actually receive signals from the customers real time, connecting with the factory's software platforms. If you do that, if you're connecting those things, and when you have 100, 200 pieces of garments with hundreds of millions of active customers worldwide, and then you test it, and then you started to see demand signals surge, and then you started to network the factories to produce similar things. And then once you see the weakening signal, you shut them down. So that's how you control your inventories to such a degree of significantly less unsold inventory. So you will literally test with as few as 100 to 200 of a new style? It's not test, we actually make them and we sell them. If you sell them well, you pump it up. If you don't sell them well, you shut them down. And that differs drastically from traditional, which was much larger non-networked bases, which basically produced thousands and thousands to then sell. I would say, traditional apparel model would be mass producing the styles a few designers want you to wear. And we literally micro producing the styles that you want us to make. So that is the difference. It's very significantly different. How do you think about that relationship with the supplier? Who gets what?
how they work together with you to work so closely in that very fast-moving environment? We like to think ourselves as a empowerment company. You know, we have partners. We don't have transactions. Everybody's a partner. Fulfillment, chain of operations, distributors, distribution platforms, the supplier factories, and most of them have been with us for forever, for a long time, because we grow together. It's not a big factory. Big factories won't take 100 pieces order. It's not enough. Smaller factories, they can grow with us. When it comes to actually the supply chain management software, one of the, I think, big elements of your business is that all of your suppliers also need to be on this supply chain management software. Why is that a necessity, and what does that allow you to do? Then you can allocate orders. Otherwise, if you don't know the capacity and also where they are on the last order, you cannot network. You cannot reorient your orders, right? Order allocation, if you think about Uber Command Center, it's basically connecting all the pieces, the demand supply, and then our job is to match the demand supply to make sure there's no wastage. Our DNA is about to eliminating wastage and improving efficiency to the hill. How quickly do you know when something's a hit? Is it immediate? So you have these 100 or 200 and you do sell them. Is it very obvious when you have big winners on your hands? It's automated. The signals, the data would the signal you will receive the signal, you'll do accordingly. Do the suppliers have any other partners? We have exclusive suppliers. We also have non-exclusive suppliers. But all of them, if you want to onboard with us, you have to be on our supply chain software platform. So we are able to actually conduct our on-demand business model as a result of it. Otherwise, we couldn't do it. I'm a venture capitalist for my sins. The reason I ask that is because I'm thinking about margin compression. And what I mean by that is, are you then able to say to the suppliers, we are your sole provider, we would like it at this price, and you have much more ability to squeeze on price because of that relationship? Well, that's much deeper to really get into and really talk about it in detail. So we can talk about it later. The whole thing is not about, for us, the partnership is not about squeezing. For us, partnership is about how to grow together, how to make money together. So we are an empowerment company. We have no debt. We have no assets. And what we own is really partnership. What we really wanted to do is to make sure that that customer is really happy. However the size she is or he is, however the color preferences or style that he or she would like, whichever country that he or she lives, whatever it is, that we just wanted to be the empowerment agent for the freedom of choice. How else have you innovated on the supply chain? Because that is a very different approach, but that is also just one stage of a very kind of multifaceted funnel. How else have you innovated on the supply chain from factory to consumer? I think the model itself is the core. Everything else, we try to refine it, tune it every single day. What's the biggest thing that's broken for the model? A lesson that you've had from something that didn't work? Oh, we actually didn't anticipate this. Oh, this thing didn't go as planned. As far as the customers are concerned, sometimes that, we kind of follow you call it follow the money. We follow the customer. We had younger generation, Gen Z, as our main customers. They grew up and then they get married. Now we have kids. They have houses, and now we have pets. And we have home goods, arts and crafts, and we have many. So we follow the trajectory of our customers. And sometimes we become, the business itself is the customer always get to choose. They can, they have all the choices in the world. All these online companies, all the physical retail, they choose us. There's a reason they do. And they also wanted to continue to come back to do more with us. But we can't possibly make everything we sell, right? So these apparel things, we do make everything, not everything, most of the things we sell.
but if it's a refrigerator, if it's a whole bunch of other things in electronics, so we're kind of getting into that. Do you mind if the summary is made that people choose you because of price? You are very, very affordable for a wide range of people, which is fantastic. Is that okay with you when you hear that? The primary reason that people choose you and your apparel is because of price, price king. You know, there are many reasons people like to buy things from a retailer. It could be somebody's selling dreams. And that's a good thing. I like to live in my dreams, so I buy things from a dream factory. Some people are selling for very low prices. And sometimes I see the prices at low enough and I like to try without really thinking it through. We like to think our brand is selling for choices. So if it is the choice you're making and we actually match that choice, then you'll love it. So the ultimate is bespoke. But bespoke is for very, very, very well-to-do people. It's not for everybody. So we do approximate. When you approximate, you actually can get to very significant part of what people really wanted at the lowest price possible. So we're talking about here, the availability is your choice, accessibility is the online part, and then affordability is because it's on demand and you listen to customer as a virtuous cycle coming back to give you the affordability. So they're connected, all these three A's. I have to ask, I spoke to my mother before this show and she said, oh, thank Donald, I bought 3 dresses from them and they're wonderful. And I said, that's great. And she said, yeah, they were £9. I said, they were £9 each. And my question to you is, how do you make enough money on such low AOVs, average order values, when you look at the supply chain from, you know, being made to delivery? Just where's the margin in it for you? We're profitable. We have growth. The unsold inventory part, the way you have to deal with it, you have to market, you have to do all these kind of things is a headache. And management of the supply chain in the most efficient way is a headache. What percent of yours is unsold inventory? It's very low single digit. Compared to market, what is market? You know, traditional thinking, it would be like 25 to 35%. And the way that you do that is because of your small sample sizes on the first sale that you do before you ramp it up. It's on demand. On demand is basically, you know, supply chain ought to be on demand supply chain. Shouldn't be on supply chain. It doesn't rhyme very well. It just doesn't make, it doesn't make sense. It makes sense if everybody responds to your vision. I think that ship has sailed. I love that in terms of I want to buy from a dream factory. I do. I do too, but I think it's a great statement. Can I ask, you mentioned very kindly, bucketing me in this age of young people, social media has been a big driver on the customer acquisition side. You have Shein hauls, and you've dominated social in a lot of ways. When you look at social media and how you've approached it, how do you think about what you've done that's worked well and how that's contributed? I think we are a grassroots business, or you can call it grassroots movement company. And, you know, every time you have grassroots and you would like to have some grass tops, you know, that's what we've got. And they have intimate relationship with the group of like-minded people. So that makes them very, very engaging and powerful. And if we work through that, that's quite effective. Some of the social posts which go very viral are hauls, which I learned in this research, which is where they buy lots and then try it on very quickly. And a lot of people say that you're in the fast fashion business. Mm-hmm. Is that fair? Or are you not fast fashion? I would call us, you know, I repeatedly calling us on-demand fashion company, because we, you know, I think the image of fashion conjures up the change. If you have change and you have too fast of a change, that kind of represents fickleness. And if you change your mind before you actually can wear them or wear them often, that becomes an issue to a lot of different groups, and myself included. So if you can actually... What if the customer wants that?
Sorry, I didn't mean to interrupt you, but it's such an individual expression of someone that they go to a bachelor party and they want to dress like, I don't know, whatever they want to dress like, but it's almost one and done. And actually, we are so individually expressive that we actually change so quickly that actually, what if the consumer wants fast fashion? The Harris poll that we commissioned recently, the UK and the US, came back exactly that. Our customers wear our products longer and more often than other brands. Okay, so there's something there that we should dig in because they believe that's their style. And for example, I before I came over here, I was in the office of JD Sports. His assistant was there, or his chief of staff was there, and she said she's a big fan of ours. I said, what is the most important thing? Why is that? Why do you like us? I always find the style I love on your site. They always have the same answer. It's their choice. Okay, when you're selling choice, it's powerful because at the end of the day, it's the customer who choose you. Okay, they have all the choices around the world. They choose you because you have their choice. How do you think about the paradox of choice? I think about this a lot, which is like sometimes if you give humans too much choice, they don't know where to go. The great Matthew McConaughey talk where he says too many choices will make an enemy of us all. It's only for the people who are kind of privileged. If you're talking to very resourceful people and successful people, yes, you're right. But we're not serving just these people. We're serving everybody. Our mission is to make fashion accessible to all in every corner, every country, every community. And these are the people we want to address. And we want to improve their self-confidence to have a better tomorrow because they're confident. The freedom of choice is not free. How do you lower the price of freedom of choice to make sure people feel lack of resources not a hindrance? Exactly. Thank you. Not at all. You said there about kind of being global to everyone in every corner of the earth. Where is your biggest market today? United States. United States. How do we think about global expansion? And when you review the last 3 years, how do you think you've done? We don't think ourselves as a globalized company. We think ourselves as a glocalized company with emphasis on the localizing. It's global local. Global local is as far as I can see, is a trend. People are looking more inward as a trend, whether we like it or not. But you still, if you want your business to thrive on a global scale, you have to become a local community business. So in England or in Great Britain, you want to be a UK company. You want to be part of the fabric. You want it to be everything as part of the community. You don't want to be some company parachuting in just making money. That's not the kind of a trend anymore. How do you structurally set up for that? Because I agree with you, and I think that's absolutely true. But then do you have CEOs of the independent companies in each nation that you expand into? How do you structure the organization for that? You spend appropriate amount of time, resources, efforts to think about it and doing that. No one has the formula. It's a fairly new thing that we all have to, chart our own trajectory to do the right things. And this is the right thing to do. When you review the American expansion, it's been an amazing success. When you review the American expansion, what do you think you did really well? And what do you think, with the benefit of hindsight, you'd do differently if you had the time again? It's the same thing. You listen to your customers. If you're David, not a Goliath, you always listen, adjust, and respond. You continue to improve your response time. And you continue to figure out ways to better service that customer so their choice of you become more resilient or more solid. How do you improve your response time, improve your speed with the increasing size of your company and with your transitioning into Goliath? Businesses always become slower as they get bigger. How do you get faster as you get bigger? Because you treat every single customer as the customer. If you are dictating a trend, then you sell the same thing, same way all over the world. We sell different things differently to different people in different countries. So
And then the trick, obviously, to automate everything. What mistake did you make on entering the US? Something that you didn't know, didn't see, didn't do? In today's world, I think we're moving into something a little different, as I have learned in the last years. The stakeholders are just as important as the customers. You have to keep the communication channel open. You have to keep on learning from the stakeholders, what they're thinking about, what they think you should do. You should solicit and encourage feedback so you can constantly do better on real time. And before, some of the, let's say if the impression is correct, that we're not doing something good, and then we should correct it. If the impression is not correct, and then we're actually doing something great people misunderstood, we should share it to have the community to embrace it. So all these things ought to be done in parallel as you grow your business. So you become more stable and more accountable and more responsible. And you didn't do that? Well, in the very beginning of the time, that we paid more attention to the consumers. And I think to paying attention to stakeholders is a very important thing to do. And we should do it earlier and more often. And we still haven't done enough. And when you say stakeholders, that is the supply side? No, stakeholders would be your mayors, your governors, your MPs, your representatives in your districts, and your prime ministers, so a lot of regulators. So all the people, and also to some degree, we don't really have exactly the competitor do same thing as we do by definition because our model is so unique. But people will say, okay, if these guys are taking wallet shares, therefore they're taking part of my market share. That's true. But we should share the business model. We all can do better. My question to you is, when you look at market expansion, paid is quite a significant part of it, and you are everywhere in London for sure, and in a lot of international markets. How big a role has paid been in dominating local markets? It's also the stage dependent, right? So when it first entered, you do differently in terms of marketing. As you become more mature, you also adjust your paid. So all these things. Is that controlled by the local company, or is that controlled by the head company? It's by collaboration. So you have to look at all parts of the business and data, and then you make decisions. Principles are the same, I guess, or similar in all these kind of a data-driven business. What does great brand mean to you? With paid, you can put brand in front of people. We believe our brand is your brand. If you buy things from us in UK versus people buying things from us in Saudi Arabia, by the way, we have a huge, very, very grateful that we have a very good following in Saudi Arabia, for example. And they think of us differently. How do they think of you differently? I'm fascinated by that. Because, the style that you want us to make is different than Saudis want us to make. They're just different. So if we are the empowerment of, if we are provider of your choice, so you think of your brand as, okay, you have my stuff. It's not like, oh, you have the things that everybody else is buying, so therefore I'm buying. No, that's different. It's your style. So if it's your style, it must be individualized or localized or groupized or individual groupized. Many different things I want to move into. When you think about like where you're not, but where you want to be, we spoke about geographies and expansion there. What are the biggest growth factors for you today that you have not capitalized on yet that you're excited to? If you just look at the TAM, the different people have different answers. The TAM is so big. How do you define the TAM? The TAM is maybe apparel. Of all price range. Who is your biggest competitor, do you think? I think ourselves, right? So if we become complacent, do not continue to improve our business model, we should try to refine and fine-tuning our business model every single day and to do better, not to be complacent. How could you improve it from here? Improve the speed of time, delivery time, improve localization or globalization to have, unique hubs for the continent so you can shorten the time. You can have better relationship with the consumers or closer. You can develop better relationship with the stakeholders because you're closer. You can make your products more planet
friendly because you're closer. There are a lot of things you can do to be on that journey to be a better, more accountable business. So I talked about availability, accessibility, affordability. Now it is about accountability becoming a very significant, important focus, to focus on compliance, to make sure that we're not only compliant with local law. 150 countries, a lot of different type of laws we have to comply. It's an effort that we have to do that to be more transparent. Speaking of local and compliance, I'm sorry to ask this, but I'm intrigued. How do we think about tariffs in the ability to go beneath certain price points and what that means for where you're able to pay? And so I think there was a recent thing which was because of the price points of your products, they're under a certain point, which means you don't have to pay tariffs. How much of your success is on going underneath tariffs to avoid that? Let's take a look at why people want to reform. Everybody wanted to have a level the playing field because that helps fair competition. Fair competition is benefiting the consumer. You want consumers to make sure that continue to receive things on the timely manner, at the same time to enjoy their trendy clothes. So all these things, if you consider them all together, that comes to perhaps a thoughtful way to elevate the disclosure, a thoughtful way to actually not to slow down, but speeding up the process. And perhaps certain things ought to be paying taxes to be fair, like TSA pre. Whoever willing to share all the data, let's go fast. People don't want to share data, go wait in line. So things like that can be resolved. If we can resolve it in the right way, I think it helps the consumer, protecting the business, also protecting the not only consumer, also business and the merchants. I find young people very confusing today. And now I sound old. But you absolutely have this individualism, this wanting to express themselves in a way that they never have before, quite. And then you also have climate change being very important to them. Yes. And it seems like they kind of go in contradiction. And I have this problem with young people because they all march and they all bluntly don't quite understand a lot of the consequences of what they do and buy, I think. How do you answer the question that people always ask, which is that you are bad for the climate? Because I'll get in trouble if I don't ask it. Let me answer the we're bad for the climate first, and I get into the question you asked earlier. If we are on the pre-consumption side of the equation, for lack of unsold inventory, that must be pretty good. So that's good. And we should continue to do that on demand, not to have too many things. You have, let's say if you have 4 seasons, 100 styles and 25 for one, and then you have 5 great ones that you picked right, and then 20 didn't do well. And 5 of them you only found out that you have not made enough. And the other 20 you haven't made too much. So that's imbalance. That's not a good business. The on-demand is every single time that you actually just sold or sold enough, very little left over. And then your response to, and people just use it once and throw it away, is that's actually factually incorrect. We have the data to prove that. We have the data to the survey to say that's incorrect. But that doesn't mean that people don't throw it away. There are still that 10% of people, they still do. That's still bad. How do we, the question is, how do we make people, before they buy, make sure they actually will like it? Not it's somebody else telling you to buy. That's one. Number 2 is, how do you actually love what you've got, right? In life, it's all about love what you got. If you love what you got, you're not going to be unhappy. Typically people go out to buy some more or have wandering eyes or whatever. It's because you don't have what you got. Because you don't love what you got. It's so funny you say that. Probably the biggest problem facing retail today in this world is returns. And it's actually this consumer behavior of people buying 10 things and then keeping 1. And it's well, if it's on demand, it will be less because it's yours. If it's not on demand, you give me 10 things, let me try it. And I try 10 of them and none of them I don't like it, just return. And when that happens. So if actually this resonates with me, instead of you're saying I should buy it, now I want to buy it, then it reduces return theoretically. Your success has been unbelievable. And when we look at
natural financial mechanisms to achieve liquidity and the natural progression of the company. I spoke to some of your investors too, who we mentioned before, and they said the IPO is so important for the restart of the China tech ecosystem, and it's a big responsibility. How do you see your role and your role model status for global companies with Chinese roots? It is a heavy burden. If you put it that way, it's a lot of responsibility. I'm not sure if we are in that kind of center stage. If we are, that we shouldn't be, and we really, it's a heavy responsibility, heavy burden. But at the same time, if we do well, I think we'll have an impact. Do you not feel that burden? I mean, you are whatever the price is, a huge company, and your ability to price on a global market, whether that is NASDAQ or London or wherever it is, that will dictate how a lot of people think about, a lot of maybe Chinese-rooted companies. Do you not feel that? I feel that. I do. I think at the end of the day, the market will decide, right? So if it's an open capital markets, the market ultimately will decide whether this concept is right or not. The consumer today decided they want to be our fans. They like our approach. They voted. So now here's another test to see if the capital markets think this is a good business model, good approach. Why is IPOing a good idea? You are profitable. You are growing insanely fast. Customers love the products. Why IPO? We wanted to embrace public diligence, embrace scrutiny. We wanted to make sure that we are not at a certain scale. We're no longer a brand new startup. We're operating in more than 150 countries. What would be a better exercise to have to go IPO if you wanted to have public diligence and scrutiny and to seek total transparency? Once you're a public company, transparency is no longer an option. It is a responsibility. It is a requirement. And as we are doing this exercise, we are doing everything we can to make the company accountable. 5 years' time, if I said, hey, you can project out what success would be for the business, where would you be then as a business? Both public, private, verticals, growth, where would the business be? We think about how we're going to solve problems every day. We think about how big is the TAM, how we're going to organically grow. And so far, we still have significant growth. So far, we're still profitable. And we're worrying about one step at a time and to really look at the consumer's needs as the most important need and to satisfy her and him and to do better every single time. I hope it's okay, but I think you're an incredibly wise person, Donald, and they would be foolish of me to not take advantage of your wisdom in another way, which is you've mentioned the importance of the pick being your wife. You've been married for many, many years very happily. When you look back on the marriage, what are some of your biggest lessons on what it takes to have a very happy marriage? That's pretty easy for me. If you're a young person, you have the L is a different L. And then later on, obviously any kind of relationship will have challenges and you have to overcome it with love, right? So you have to be powered by love. That's a different L. But truthfully, everything about a successful marriage as an outcome always have luck. Okay, so we have 8 billion species. How do you have 2 people to be the best kind of match? It is not scientific. If you're a science-based person, you say that's not really, very genuine. But it is genuine because if you actually have the best pair, that means there's some luck involved. And then you powder with love, and then in the very beginning, you're attracted by a certain type of L. So with the very happy marriage, you also have children, and that's a very important part of your life. But you are so busy, and you have a very full-on working life. What have been your biggest lessons? And I worry and think about this as I look forward. What have been your biggest lessons on how to be a great father and crush it at work? Probably impossible.
unless you are extremely lucky. Um, no, human being, we're not machines. We don't allocate just perfectly. Can you take me to a time when work got out of whack and you felt like you were not being the father you wanted to be? All the time, I haven't been as a good father to my kids, of course. But that's, your better half comes in and, fulfill, the responsibility I haven't fulfilled. Does that weigh on you? Oh, yeah, absolutely, all the time. Do you have regret, or do you just have the forward looking? Oh, I have regrets. I think I have regrets in thoughts, not having regrets in emotion. What does that mean? I don't overthink that, so you can joke about regrets, but you don't drill on it. Everybody has regrets. Some people talk about it, or think about it all the time. Some people have their thoughts and move on. I got told the other day that the heaviest things in life are not iron or gold, but unmade decisions. That's interesting. And I thought about that. And then I got asked, what is your unmade decision? And my unmade decision was very clear. I had the chance to move to San Francisco 10 years ago and be a US venture capitalist and a US technologist. And I chose to be in London. I don't know if that was the right choice. The unmade decision that I think about. I would say if you keep on making decisions, right or wrong, and you will have less of burden of unmade decisions because you don't allow that pile up. So you don't have a lot of them, so it doesn't weigh on you. So the truth is, if you have unmade decision, don't think about it. It's already gone. You're not going to go back and make another decision. And it could be better, could be worse, who knows? Why even think about the things you haven't done? Why even think about the things that never happened? So just keep on making decisions going forward, moving forward. Final one for you before we do a quick fire. I have also kind of thought a lot about relationships to money and how we think about kind of wealth accumulation. What have been your biggest lessons on your relationship to money? And what would you advise me, Donald? You're a wise man. You don't need advice. If I had to tell you something, just don't let money get into your head. So it's meaning the money is just another tool. The focus is doing things meaningful and stay focused and stay happy and be nice to the people around you. I think that's about it. You cannot be nice to everybody in the world because now you're overthinking or you're giving yourself too much credit. But just in your core, and you keep on doing things and making decisions, like you said. Don't leave decisions unmade. You can call yourself up the night before the birth of your first child and say, Donald, you should know this. What would you say to yourself? When you actually look at your child for the first time, it is the most memorable moments in your life, bar none. And I can bet anything with you once you have that moment, that will be the most memorable moments. Now, the tough part is after that moment, then it becomes very challenging. It's probably the most challenging project, if you call it that way, or the most rewarding project. Okay, and then they come hand in hand. What is the most challenging element of being a parent? You just have to let it go. You just have to, you're not directing anything. You're not owning anything. You just want to be on demand. You wanted to do what this precious being want you to do and do whatever you can to make this thing as good as she defines as it is, not what you define. I love the full circle there. I'd love to move into a quick fire. So I say a short statement, you give me your immediate thoughts. Does that sound okay? It'll be good fun. We can roll with it. Number one, what is the biggest misnomer that people have about the business? Not necessarily about us. I think in life, I'm guilty of that too, is good must be expensive. Inexpensive must be bad. Don't ruin LVMH's business model. I love, I love the brand. I do love the brand. But I'm saying the inexpensive not necessarily is bad. What do you believe that most around you disbelieve? So mine, for example, is the only way you can be truly successful is if you're obsessed. And when you say successful, I mean professionally successful in achieving your goals and ambitions. This idea that you can have the weekend off every weekend and go home at 7 and watch TV and chat to your partner. No, you have to get back on your laptop
pretty much every night after dinner and work. And every weekend you work. And there is no time off. There is no phone in a drawer and I'm done. If you're running a business and building a business to be a huge outcome, $1 billion plus, obsession is the only way to do it. I disagree. The obsession is a good thing, but you cannot just generalize it. If you generalize everything, then that's why we have identity crisis. There are a lot of these kind of things. Obsession is good in certain parts of your life, in certain period of your life, and in certain way of you doing things. But it cannot be good for everything you do. 100%. Yes. But can you name a multi-billion-dollar company that's built without obsession? So if you're saying the obsession of Shein is about the consumers, I agree with you. That doesn't necessarily translate into everybody has to work many hours. No, but the founders do. The founders do doesn't mean he doesn't enjoy it. Oh, totally. You can enjoy. I love what I do. And then go for it, I say. And then you don't call it obsession. This is your fun. So when you are, it's like you're chatting. Now you're saying, okay, I have to work. I have to chat with your friend. You have to chat with your friends. You have to watch TV. It makes me to think that you're actually making choices. And they have equal weight. They're not equal weight. And for some people, this is like really preferred. For you, this is really preferred. So you have already made a decision. So that's not an obsession. Who is not on your board that you would love to have on your board? We have a dynamic situation, as you know, that we're going, doing, there's a change going to happen. So it's not something I can really talk about right now. What have you changed your mind on in the last 12 months? So an example for me here would be that people say we have this company culture and it's X. Your company culture depends on the person. Some people respond to the carrot, which is the reward. Right. Come on, we can do this. Let's build together, Donald. And some people respond to the stick. If we don't do this, we're going to be in trouble and we're going to lose to this competitor. You have to be plastic with how you apply company culture to get the best out of your team. I've changed my mind on that. When I talk to people, this is like a life experience I've learned. When I talk to people, sometimes I felt I have gone through my logic and come with my supporting data and then collapsing with skepticism to facts and then moving beyond that and the like. So I thought, case closed. It's not that simple. It's far more complicated than that. How do you overcome certain like age-old conviction and changing people's not only their mind, their hearts? For example, the world is flat. I always believe the world is spiky. And how do you convince people of that? The upward mobility is really difficult to obtain. And downward mobility is like having lunch. And that's what people do. If you have different resources when you are born and you come to the world differently, the ability to use the resources to acquire education, technology, all of those tools becoming not the equalizer, actually is disequalizer. What advice would you have to someone leaving university today, entering the workforce for the first time? That's something I have learned from Shein. You just have to be on demand, right? You have to figure out some ways to think who you are and what the marketplace or the world of demand of you. And then you kind of fulfill that demand. That's the way to fast becoming useful and valuable. What's the kindest thing anyone's ever done for you? I think when my girlfriend married me as a dishwasher, no, I take it back. That's a very kind thing. It's not the kindest thing. But to actually listen to me and having no sense of logic at all and just believing in my own BS and keep on talking a great game and then still feeling that, want to give me a benefit of the doubt. And that's the kindest thing. That my girlfriend did. And a lot of other mentors of mine have done that. I'm sure you've been asked many times to do podcasts, to do interviews.
I'm so touched that you did this. Why did you decide to do this one? Oh, I had a great walk with you. And you're very unconventional, and you become a friend. I really appreciate that, and I love the walk and I love the wisdom. So, final one: what question are you not asked, or have I not asked that I should have done, or people should have done? There's nothing really came to mind, but I would say, I would ask you, how do you stay focused and then treating every minute kind of productively? How do you do that? What's your answer? I always remember Danny Reimer, who's a very famous investor in London, says you have to remember to keep the main thing the main thing. Yes. And the hard thing I find with success is that there's many shiny things. Yes. And the more successful you become, the more shiny they are. And the importance of understanding two vectors: what drives ultimate progression towards goal, and then also, does that correlate to happiness? Donnie is very, very lucky to know what the main thing is, but most of us don't know what the main thing is. So if you want to keep the main thing, what is the main thing for you? For me, the main thing is to build the best early stage investing firm in the world. And we use media to do that. I see. I got it. Maybe for you, it's to provide customers with the most incredible products. And you use an incredible supply chain and fantastic apparel to give them that. Right. Now we actually have significant advantage of the scale. And then we can continue to scale it. Or do we want, in this stage, do we want to steer it to the right choice, right? So it's about choice. It's about your choice. Donald, listen, I've loved doing this. Shows like this are why I love what I do and get so much energy from doing it. So thank you for being such a great guest. Thank you. All right.